Some proteins are hormones that are basically chemical messengers that help communicate between different cells, tissues, and other organs. They are secreted by glands that are called endocrine glands. The secretion is released directly in the bloodstream from where they reach the target organs. The enzymes bind to the protein receptors that are present on the surface of the cell. Some proteins act as a carrier for different molecules and transport them inside and outside of the cell. Some of the proteins carry various important nutrients across the bloodstream. Glucose transporters move the glucose to the cells, while lipoproteins transport the cholesterols and other types of fats in the blood. Protein transporters are very specific. For example, protein carrying glucose will not carry cholesterol. Certain chemicals are made from the fat cholesterol that contains protein molecules as well. They are known as steroids. Some examples include the sex hormones that are steroid-based. Most of the hormones in the body are made up of proteins and polypeptides. We have learned about hormones in the previous sessions as well. To reiterate, some of the common hormones in the body are insulin, glucagon, adrenaline, thyroxine, etc. So, amino acid chains of varying lengths form proteins that make up many hormones that help in regulating standard biochemical functioning. And then there's the structural function. Some proteins are structural in nature, as I mentioned during our earlier discussions. They offer much needed rigidity to cells and tissues. Keratin, collagen, and elastin are some of the proteins that make up hair and nails. Even the rhinoceros's horn is formed from keratin, the same protein that makes up human hair. Can you believe that? Collagen is the protein that has the highest amount of concentration in the body. It is a structural protein that constitutes the bones, tendons, ligaments, and other connective tissues of the body. Elastin is about 100 times more flexible than collagen. The elastic nature of elastin allows multiple tissues in the body to retain their original shape after undergoing stretching or contraction. The arteries, lungs, and uterus are some parts of the body that contain elastin fibers. Proteins also help with the maintenance of proper pH levels. The pH level of the body determines the body's acidic nature. Proteins play an important role in keeping the pH balance of acids and bases in the blood and other bodily fluids. The pH scale ranges from 0 to 14, with 0 indicating acidity and 14 indicating basicity. The number 7 is thought to be neutral. Let's look at the pH level for various body components. pH of 2 is stomach acid, of 4 is tomato juice, 5 is coffee, 7.4 is that of human blood, and pH of 12 is that of soapy water. A variety of buffers maintains the pH balance in the body. When the body's balance is disturbed, it can be harmful to the body. Proteins help in the body's pH regulation. Hemoglobin, which is found in red blood cells, is an example of such protein. It binds with little amounts of acid to keep the blood's pH steady. Another buffer system in the body existed via groups such as phosphate and bicarbonate. So, proteins act as a buffer, letting the pH balance be maintained. Proteins also help in maintaining the body's fluid balance. Albumin and globulin are proteins that help the body maintain its fluid balance by retaining water. If a person does not consume enough protein, albumin and globulin levels gradually decrease. As a result, the proteins cannot hold the blood within the vessels for an exceeded amount of time and the fluid seeps into the cells.
And as the fluid continues to seep into the intracellular space, swelling can occur accompanied by pain in the stomach. So, you see, proteins are a crucial nutrient for maintaining the fluid balance in the blood and its associated vessels. Another important function is to bolster immune health. As we already know, antibodies and immunoglobulins are made up of proteins. Thus, one of the main functions of protein is to fight infection. Antibodies help in protecting the body from pathogens like viruses and bacteria. What happens is that when these pathogens enter the body, an immune response is automatically generated. This response is taken up by white blood cells, which lead the fight against these pathogens. Our immunity is developed by specific immunoglobulins that we acquire throughout our lifetime. We have all been vaccinated in our lives, and they are composed of proteins. Once the body gets acquainted with these antibodies, the cells remember the chemical configuration. This allows the antibodies to respond to the pathogens when it enters the body in due course of time. So, if the body is exposed to such diseases, our body develops immunity. And all of it is done by proteins. Proteins' vital functionality is to be a storage of nutrients. Proteins also store some important micronutrients. For example, ferritin stores iron. Casein, which is a principal protein in milk, is a storage protein that helps in growth. If you remember the protein sparing function of carbohydrates, you know that proteins are an energy source. But we do not want excess protein to break down so that the body's structural integrity is maintained. Proteins give 4 calories per gram, which is about the same amount of energy provided by carbs. Fats contain the highest number of calories. When there aren't enough carbohydrates in the body, the proteins are broken down into amino acids. Carbs and fats are better suited to provide energy as the metabolism of these nutrients is more energy efficient than proteins. In essence, protein provides very little energy under normal circumstances. However, in a state of fasting, the body will break down the muscle proteins such that the amino acid can provide energy. Proteins have varied functions and roles to play in the human body. From growth to an immune response to enzymatic activities, proteins is a part of each step. Hence, it is a crucial macronutrient that should be a compulsory part of our diet. The quantity of protein consumed is equally important, as is the source. Proteins need to be packed with other nutrients because they all work in tandem. For example, lack of carbohydrates in the body will invariably allow proteins to be used as an energy source. So, if we know the dietary sources well, we can prescribe a healthy and balanced diet. Now that we've discussed all the protein's functionalities in detail, let's talk about protein metabolism. However, it is not directly broken down into processes. We'll explore how these processes work out proteins in the body. The digestion of proteins involves their breakdown into constituent elements, which is amino acids. However, it is not directly broken down into amino acids. It follows a proper chemical pathway
where the major protein substrate gets broken down in consecutive steps. Let me give an overview first. The proteins are first broken down into peptides. If you remember, the amino acid chains are formed by the peptide bonds. When these bonds are broken down, peptides are formed. Each of these peptides has a different number of amino acids and is finally broken down into individual amino acids. For this breakdown process, enzymes are required. Pepsin is the enzyme that aids in the breakdown of protein molecules. Pepsin is secreted in the stomach in the acidic condition of the stomach. The breakdown of protein is called proteolysis. Pepsin accounts for about 10 to 15% of the entire protein digestion. In the first hour of digestion, they are the most active. However, the enzymatic activity of pepsin is constricted because it requires an acidic environment for proper functioning. To be precise, protein requires a pH level between 1.8 to 3.5. There are other enzymes at work too. Trypsin is another such enzyme that further breaks down the protein. It is much stronger than pepsin. Trypsin is secreted by the pancreas and is released into the small intestine. Thus, most of the protein digestion occurs here. Protein digestion will not be significantly affected even if the stomach is not functioning properly. Since these enzymes break down protein, they are generally termed proteases. If you remember the naming convention of enzymes, how the suffix ase is added after the name of the nutrients it breaks down. But have you wondered why don't these proteases attack the stomach? After all, our body is made up of proteins. The answer lies in the essential characteristics of proteases. These enzymes exist in inactivated form. That is, they don't attack the proteins. But in the presence of food particles, these enzymes interact with another enzyme called the enterokinase, which is secreted from the small intestine walls. This activates the inactive protease and prepares it to attack the protein content of the food. Trypsinogen is the inactive form of trypsin that is activated in the intestine. It also interacts with bile acids. When the terminal amino acids from the trypsinogen gets detached, it gets converted into trypsin. The other proteases are converted into their potent form by the trypsin generated earlier. This is how dietary protein is broken down into smaller polypeptide chains and then into amino acids. Endopeptidase enzymes such as chymotrypsin help break down proteins in the early stages of digestion. Then, these molecules are further broken down into constituents by enzymes called carboxypeptidase, which is secreted by the pancreas. This is the general detail of how proteins are broken down into their constituent elements. Once they are broken down, they need to be absorbed and transported into the bloodstream. Different peptides are transported in different ways. Dipeptides that release 2 amino acids on hydrolysis are moved from the surface of the small intestine through a carrier protein. Even tripeptides that release 3 amino acids on hydrolysis are transported in the same manner. The transport requires energy as it involves a carrier protein. Small peptides with a lesser number of amino acids are generally absorbed this way. The major breakdown process of the peptides into amino acids occurs in cells of the small intestine called enterocytes. Small peptides are absorbed at a much higher rate than amino acids. Even after such advances in research and scientific studies, the exact details of amino acid absorption are yet to be figured out completely. Some amino acids have their transport system, while others can even share one method. Protein metabolism takes place in the liver, especially the process that we call deamination of amino acids. It helps in removing the toxic byproducts of the protein breakdown
like urea, ammonia, etc. We will get into the details in some time. Almost all the essential amino acids are taken in the form of ingested protein. It is also the primary source of nitrogen that is crucial for synthesizing the non-essential amino acids. As the protein is digested and broken down into amino acids, they are circulated in the bloodstream and reach the cells and organs. As already mentioned, it is the liver that assimilates the amino acid back into the proteins. The formation of the peptide linkages aids this. Once the limit of the protein storage is realized, excess amino acids are converted into glycogen for energy storage. Sometimes they are broken down to generate energy. The liver is the main site of all the breakdown of amino acids except for branched chain amino acids. This occurs in the muscle cells. The urea cycle, which converts ammonia into urea, occurs in the liver only. The formation of any proteins such as albumin, globulin, and fibrinogen also happens in the liver. Now that you know about the overview of protein digestion, let us get into site-specific details. Firstly, as opposed to carbohydrates, protein digestion doesn't start in the mouth. Why? Because salivary secretion lacks enzymes that may potentially break down the protein. The mastication or the chewing converts the food into bolus, a mass of the chewed down food. Once the bolus reaches the stomach through the peristaltic motion of the food pipe, the stomach gets the signal to start the digestion process. The hydrochloric acid present in the gastric juice makes its pH about 1. But the stomach's content changes the pH by some factor and it stands between 1.5 to 2.5. HCl, that is hydrochloric acid, helps in denaturing the protein. You must be wondering what denaturation is. Denaturation is when the protein loses its structural integrity and gets converted into a different mass. Basically, the secondary and the tertiary structure of the protein is changed. However, the primary structure comprising the polypeptide chain remains intact, because ultimately the polypeptide chain gives the required amino acids, one of the main reasons we consume protein. A protein can be denatured by the application of external agents that can change its structure. The external agents can be a temperature rise, change in pH balance, or adding some coagulating chemical. In the stomach, the change in pH level alters the protein structure. Anyways, let me give you an example of protein denaturation that you must have seen at some point or other. The content within an egg contains albumin, which is a protein. When you fry it or boil it, the heat changes its structure completely. The moment you drop the inner content of an egg into a frying pan, you can see it spreading around and slowly hardening. This is nothing but protein denaturation. Well, this was a little detour to make you understand an important aspect of protein breakdown. Let us get back to the point we were discussing. So, as the protein is denatured in the stomach, the inactive enzyme pepsinogen gets activated. The walls of the stomach secrete pepsinogen. The conversion into active form is initiated by a drop of the pH value of the stomach. Pepsin then breaks down the hydrogen bond in the peptide linkages within the protein molecule. It is quite specific in nature, but sometimes targets specific amino acids like tryptophan, tyrosine, and phenylalanine. Sometimes methionine and leucine are also targeted by pepsin. By now, the breakdown of protein has begun. Once the stomach plays its role, the remaining undigested protein is transferred to the small intestine. Once the protein in the diet is hydrolyzed, which is broken into its constituent, it reaches
the small intestine. As it enters the small intestine, the large polypeptides produced in the stomach due to pepsin action are further broken down. In this process, the polypeptides break to form oligopeptides and amino acids by the action of the pancreatic protease. The enzymes secreted by the pancreas are quite specific in nature. That is, they act differently to different amino acids. The alkyl group on the amino acid, the carbon and hydrogen group, is present on the site of the peptide bond. This is the group that determines the action of the pancreatic enzyme. For example, trypsin attacks the peptide bond only if the carbonyl group, that is carbon and oxygen attached with double bond, is given by arginine or lysine. Abnormalities in protein digestion. Specific individuals might not have the ability to digest the protein properly. They might have deficiency in some enzymes, specifically the pancreatic secretion. The protein breakdown will not be complete. This might arise due to several problems like chronic pancreatitis, that is inflammation of the pancreas, or cystic fibrosis. Hence, the digestion and absorption of fat and protein might remain incomplete. The undigested proteins appear in the fecal matter and can give them an abnormal appearance. Amino acid pool. Now that proteins are digested, the free amino acids will join the non-essential amino acid synthesized in the liver. The amino acids are a product of the recycling of the body's own protein. The amino acids form a pool in the liver. They are sourced from it to synthesize new proteins and other nitrogen-containing compounds like DNA bases, hormones, enzymes, and neurotransmitters. Amino acids are also used to generate energy as well. But one should know that our body cannot store amino acids. If the amino acids in the pool are not used for different metabolic processes, they are broken down and the nitrogen is excreted through the urine as urea. Protein turnover. The balance between protein synthesis and its degradation is highly crucial for the good health of the human body. Not every amino acid is needed for the metabolic and biological function of the body that has taken place through diet. Every protein has a specific lifespan, and once it is completed, they are recycled. Different proteins have different rates of being discarded, which depends on the particular function. The proteins with a structural function, like collagen, have longer half-life periods, that is, time taken to degrade into 50% of its initial content. The enzymatic protein has a shorter lifespan required to adapt to metabolic requirements, like cartilage collagen has 117 years, I-lens crystalline has 70 years. Ribosomal protein has 3 hours, and ornithine decarboxylase enzymes just have 11 minutes. As is the norm, after being hydrolyzed and the amino acids recycled, the proteins get deposited into the amino acid pool. How are the amino acids transported into cells? The free amino acids concentrated in the extracellular fluids are quite lower than what is present inside the cell. The active transport systems maintain the concentration gradient between the cells and the extracellular fluid. The amino acids are transferred from the extracellular space to the cell via these active transport systems at the expense of the ATP molecules. There are about 7 different transport systems that have different specificities for a range of amino acids. The small intestine and the kidney have a common transport system for the uptake of amino acids. Thus, any defect in these systems results in the inability to absorb some amino acids. Suppose the system responsible for the intake of cysteine, arginine, and lysine does not work for any reason. Then,
all 4 amino acids will appear in the urine. Amino acid deamination. The first reaction that occurs in the breakdown of the amino acids is the removal of the main amino group. The objective here is to remove the excess nitrogen, break the remaining carbon chain, and convert it into glucose. Urea is the main nitrogenous waste product in human beings, which is synthesized from ammonia. Ammonia is derived from the byproduct of deamination and is highly toxic to the human body. So, it is first converted into urea and then excreted out via the urine. Urea is diffused from the liver and is transported through the blood and then to the kidneys. It is here that the urea is filtered. Some portion of the urea diffuses from the blood into the intestine, where it is broken down into carbon dioxide and ammonia. The ammonia from the intestine is quickly removed through the fecal matter and sometimes absorbed by the blood. However, in patients who have problems with the kidney, the urea levels in the blood are high, thereby speeding up the process of urea transfer from the blood to the gastrointestinal tract. Thus, the ammonia generated in the intestine also increases and results in hyperammonemia. In such cases, the patient is advised to lower the protein intake. For example, the diet of a kidney patient should not have substantial amounts of lentils, peas, and seeds, as they are a prime source of protein. I would advise against the consumption of red meat to reduce the intake of complete proteins. They are also suggested to consume foods containing more fibers to maintain a healthy amount of intestinal bacteria. Our above discussions clearly show that our body's ability to use protein is crucial for many important bodily functions. Certain factors like aging, stress, and other diseases might change how the body handles protein absorption and digestion. So, it is crucial to optimize the protein intake that changes with age. For athletes and people with an active lifestyle, proteins help build the muscles and benefit from the recovery provided by proteins. Efficient protein digestion can improve muscle recovery after a period of intense training. In the common population, there is a growing increase in awareness regarding the importance of healthy diets. People are slowly becoming more proactive about nutrients such as carbohydrates and proteins. Focusing on wellness, people want to optimize protein absorption and reap the functional benefit of everyday diet. Besides consuming proper foods, maintaining gut health is extremely important in helping the body digest and assimilate protein. If you have a healthy digestive system, then it will help you maintain healthy gut bacteria. The number of healthy bacteria in the gut can be lessened if the diet is inadequate or if someone is suffering from stress or infection. All these factors can contribute to improper digestion of proteins. Dietary requirements must be met to ensure proper protein absorption and use. It can be challenging at times because the amount of protein in a protein-rich diet fluctuates significantly. Proteins from some food are harder to digest as compared to others. If probiotic drinks are added to a healthy diet, they will surely improve the absorption of proteins. Probiotics generally contain healthy bacteria that support protein absorption, especially in the intestinal tract. So, you see that proteins are a complex class of compounds or nutrients that undergo some complicated biochemical process before being used for other functions. When it comes to understanding protein metabolism and, more broadly, how our bodies function while preparing proteins for eventual action, certain scientific jargons may be a bit heavy, but we must accept its importance. However, once you know what exactly is required for our well-being, you can prescribe a complete and balanced diet. Before winding up, let us recall the process shortly and concisely. Digestion of protein starts in the stomach, where the acids and pepsin swing into action. And as the chyme goes into the small intestine, it mixes with other enzymes, which are converted from their inactive state to a state of action. As the protein breaks down into peptides and amino acids, they are slowly absorbed into the blood through active transport. The major part of the assimilation of proteins takes place in the liver. The pancreas play an important role along with the liver as its digestive juices are crucial for protein breakdown. If amino acids are in excess, it is converted into glucose used to generate energy. The nitrogenous wastes released as a byproduct of protein breakdown are excreted through the kidney. When the body is starved, it is the proteins that come to the rescue to provide energy. However, a person is better off with proteins utilized as a constructive nutrient and not to generate energy. In conclusion,
I hope that you have understood the process of protein digestion. I want to reiterate that some of the terms might be a little heavy, but I am sure that you will grasp the concepts very well with little reading. Now, as we move towards the end of the session on proteins, we will discuss the various diseases that are caused due to excess and low intake of proteins. As we all know, proteins are substances found in cells, organs, tissues, and practically every other part of the body. Its significance has long been recognized. Protein deficit in the diet, on the other hand, might cause major problems. Malnutrition is one of the most severe issues that the world has ever faced. It happens when the diet lacks all of the nutrients. If the body does not provide the right nutrients, it becomes difficult for the body to carry out routine processes. Thus, more serious health problems may start to appear. With the onset of malnutrition, the body is deprived of many important macronutrients, with protein being one of the most important ones. In this session, we will go through some of the most common disorders caused by protein deficiency. Protein deficiency is one of the most common among people living in developing countries, especially those in poor areas that face a severe lack of basic amenities. Protein deficiency also affects people born with some genetic disorder that prevents the production of certain proteins. Children are one of the most vulnerable sections of society whose growth is affected adversely due to protein deficiency. In adults, protein deficiency can show its effect at any stage. The symptoms can range from mild to severe, like fatigue, constant attack of bacterial and viral infection, thinning of hair and excessive hair fall, dry skin, and easily breakable nails. On the other hand, these symptoms could indicate a variety of health issues such as iron shortage or immune system issues. Only a proper medical test can determine if there is a protein deficiency. Protein shortage can induce a variety of diseases. Let's take a closer look at some of them. Marasmus. Marasmus is a condition that happens when the body is severely deficient in protein and calories. It primarily affects newborns and children, resulting in significant weight loss and dehydration. When there is a prolonged absence of essential nutrients, marasmus can cause malnutrition and even death. Marasmus is a malnutrition-like condition. Because the nutritional intake is so minimal, body fat is gradually lost. A child with marasmus will not be able to grow up like other children. Because there isn't enough food, marasmus starts occurring. Lack of critical nutrients causes energy levels to plummet and major body functions to stop. According to UNICEF, severe malnutrition causes about half of all fatalities in children under the age of 5, or about 3 million deaths every year. Some of the causes and risk factors for marasmus are having too little food to eat, ingesting the wrong nutrients or too much of any one nutrient, an underlying health condition that hampers the process of nutrient absorption. Apart from children, older people who live alone and cannot prepare their own meals are at high risk. Marasmus is a disorder that may also affect older people who haven't consumed a well-balanced diet in a long time. If the cause of marasmus is improper food intake or underlying health problems, none of these factors is sufficient to be the sole cause. In places where food is scarce, breastfeeding infants might reduce the chance of diseases caused by malnutrition. But if it continues for more than 6 months without the infant eating solid food, then the risk of marasmus will increase, more so if the mother herself is malnourished. Children born with low birth weight can be susceptible to malnutrition. During pregnancy and in the child's early years of growth, appropriate nutrition is essential to prevent malnutrition and marasmus. Next, we have kwashiorkor. Kwashiorkor is another disease that is caused by a severe deficiency of proteins. It tends to affect older children. Kwashiorkor leads to edema or swelling due to water retention in the abdominal area.
Kwashiorkor and marasmus have some common symptoms like fatigue, diarrhea, stunted growth, and even damage to mental health. Kwashiorkor is demarcated by swelling of the feet and abdomen and also bad skin health. Low muscle mass and liver impairment are also added symptoms. Some of the functions of proteins is to maintain the balance of fluids in the body. So, as the protein levels fall, the body cannot gather enough amino acids to synthesize albumin. One of the main functions of albumin is the retention of water inside the blood vessels. So, due to lack of albumin, the water leaks into the extracellular space and into the tissues, thereby causing severe edema. Protein deficiency and the lack of other micronutrients like iron, iodine, and even vitamins can all add to the onset of kwashiorkor. Marasmus and kwashiorkor sometimes coexist in the form of a combined disease that is called marasmic kwashiorkor. Children afflicted by the combined syndrome have edema and the symptoms of marasmus. Infections are usually blamed for the death, despite the organ's function being impaired in this state. The primary cause is malnutrition, which is deeply linked to immune system dysfunction on several levels. Children who suffer malnutrition die from diarrhea or other bacterial or viral infections due to their malnutrition. Deficiencies of protein C and protein S. Deficiencies of protein C and S are genetic conditions that are inherited from the parents. It can cause abnormal blood clotting. Deficiency of these protein C occurs in the ratio of 1:300 people. The deficiency of protein S is even rarer as its ratio stands to 1:20,000 people. Some of the symptoms of these specific deficiencies are redness, tenderness, pain, and swelling in the affected area. People with such deficiencies are more prone to blood clots and thus have to remain careful about their activities like continuous sitting and long time travels. Deficiency of protein S can also cause an ischemic stroke, a blood clot that blocks the blood supply to the brain. Another problem is cachexia. Cachexia is a condition that occurs due to protein deficiency and is identified by a rapid rate of protein degradation. Even in some cases, there is depletion of skeletal muscles as well. Cachexia can also cause weight loss, kidney failure, heart disease, and even block the pathways of the lungs. Patients who might have problems in the stomach, liver, or biliary tract might experience fatigue and negative nitrogen balance resulting from cachexia. These were some of the diseases caused due to lack of proteins, mostly due to malnutrition. Right at the beginning, we talked about some symptoms that can affect a healthy adult. The lack of proteins can cause the weakening of muscles. So, we need to keep a check on the diet and try to consume the amount of proteins in grams equivalent to body weight. One should keep a check for these symptoms and modify the diet according to the changes observed. The knowledge of these symptoms will help you, as a nutritionist, create a proper menu that caters to all the person's needs. And with that, we'll go on to the last and final topic, which is disorders caused by excessive protein consumption. We have discussed the adverse effects of low protein content in the diet. Malnutrition is the evil that has attacked numerous children and has taken away hopes of a healthy life. Malnutrition has been studied scientifically and economically, and numerous strategies are being implemented to combat it. Well, to be honest, this is a discussion that we all should have, especially as responsible nutritionists and dietitians. But have you wondered what happens when the nutrients are in excess? What happens when the burden of more falls on the shoulders of the less? Going ahead, we'll try to look into some of the negative effects of excessive protein consumption on the human body. The definition of a high protein diet has not been defined explicitly, but typically, diets where more than 30% of calorie intake is derived from protein is marked as excess.
Many people unknowingly follow a high protein diet because advertisements in the food business often market protein as a nutrient that can help with weight loss. It is true to some extent that a high protein diet can help in weight loss. However, the opposite is also true. The number of individuals who have gained weight from a high protein diet is much more than the number of individuals who have lost weight. There are also scientific concerns that there can be long-term health consequences if a person remains on a high protein diet for a longer period of time. Clinical trials are still going on to ascertain some of these concerns. Some observational studies suggest that diets high in animal protein, specifically sourced from red meat, are linked to an increased risk of developing kidney diseases, kidney stones, liver problems, osteoporosis, and even rectal cancer. Saturated fat and cholesterol, a type of lipid, are abundant in diets that include a lot of red meat. We'll go over this in detail when we talk about lipids in the upcoming session. The point here is that excess amounts of saturated fats and cholesterol are invariably linked to an unhealthy lifestyle. So, it is sometimes difficult to blame high protein content. A high protein diet will appear to increase the rate of kidney disease and liver malfunction, especially in those already affected by it. The prevalence of kidney disorders is quite high and mostly underdiagnosed. They are not detected properly. You can perhaps recall that proteins are broken down and release nitrogen as byproducts like urea. The raw materials are reabsorbed, and it is the liver that manufactures the non-essential amino acids. The kidneys discharge the urea. So, you can see that the liver and kidneys are the organs that perform the major work of protein assimilation and metabolism. If these two organs are somehow damaged, we cannot let them be overworked in any case. This is why patients with liver and kidney disease are asked to consume a low protein diet. Many studies have suggested that greater consumption of red meat and processed meat causes a considerable increase in colon and rectal cancer. Some scientific concerns also point out that a high protein diet can speed up the process of bone tissue loss. One of the reasons for this aspect is that the acids derived from the proteins can reduce the absorption rates of calcium in the gut under some conditions. The presence of amino acids in the blood can help to prevent calcium loss from the bones. But what happens to the calcium that isn't effectively absorbed? It is excreted through the urine. However, these effects have not been consistent in all the studies. Nonetheless, a moderate amount of risk of calcium loss is associated with a high protein diet. Calcium loss may even lead to osteoporosis in older people. High protein diets can sometimes restrict the metabolism of other important nutrients. Exclusive high protein diets are not suggested because they can restrict the consumption of a balanced diet. However, athletes do tend to follow such diets because of their different needs. The point here is that an average person should follow such a diet under the guidance of a nutritionist or dietitian. Only protein-rich diets do not provide the variety of foods needed to meet all the human body's nutritional needs. People following these kinds of diets stand at risk of compromising on their vitamin and mineral consumption. Besides, they also can become vulnerable to renal and liver abnormalities. Proteins, like every other type of nutrient, should be consumed in a certain amount. As I have already stated while talking about diseases caused by improper intake of carbs, moderation and variety is the key. It is in our hands to figure out the strategy to create a healthy composition of all the nutrients. This will also help to optimize the protein intake. The scientific community will continue its debate about some particular points regarding excess protein in the diet. Amidst this, you must think about the correct amount of protein that one should consume to remain healthy. Generally, it is gram equivalent to the body weight of the person. I have talked about it in the previous sessions as well, but the important point here to make is the correct choices regarding proteins and their sources. We should not isolate protein as such to determine its healthy amount. Rather, consider other nutrients as well to formulate a complete package of healthy food.
I hope you enjoyed this session on proteins. And with this, I conclude the study of this macronutrient. If you understand the ins and outs of nutrition we are studying, you can surely improve your skills and present yourself as a specialist. around so we all know we have lots of myths around the carbohydrates, right? So people think that, even my clients, my present clients, they come with a doubt that should we not be consuming potatoes, rice, chapati, because they are very rich in carbohydrate. So I would like to know, like, what's your call on that? What do you think कि नहीं खाना चाहिए ये सब? Ma'am, we should eat, because how will we get the energy? Okay. Our body can not only run with strength and everything, you need energy, muscles, and everything. Okay. Anything else? Thank you. Balanced diet needs all carbohydrate, fat, protein in proper portion. Okay. Okay. Great. Very nice. So I guess. I would like to add. Actually, I was reading about rice yesterday, so just I can speak from that point of view. So the white rice we usually should avoid because of the glycemic index that they have. And instead of that, ideally we should eat the parboiled rice, basmati rice, just because of the low glycemic index and the amount of carbs, fats that they give. So I can just speak from that. That's basically with the point of your glycemic index. Yeah. But as a nutrient, carbohydrate is one of the very important nutrient. जो बोलते हैं ना कि Indian diet is carb based diet and all. So it's not only Indian diet, every diet is carb based. If we talk about, other countries, they have their noodles, they have pastas, they have breads. So every diet, if we talk about is, yes, we all have, the carbohydrates in our meals. We all have proteins in our meals. We all have fats in our meals. The only thing is that we need to take care is our proportion, like how to include the quantities of that carbohydrate, proteins, and fats, right? So that's the science behind healthy eating. That's the science behind balanced eating. So yeah, so basically you must be knowing that we have, जब आप client dealing start करोगे, will be coming with the myths and everything. So it's our responsibility to gain, first thing, clear our doubts and then clear their doubts as well. So yeah, carbohydrates, starting with the carbohydrate, it is one of the major macronutrient that we need in larger quantities for sure. Another thing is it supplies energy, right? So आपके जितने भी, let's talk about the macronutrient first. So macronutrients जितने भी होते हैं, they supplies us energy. So proteins, fats, and carbohydrates, all three of them, they are supplying the energy, right? They do have additional functions as well. Additional functions means प्रोटीन जो है, प्रोटीन इज देयर फॉर योर मसल बिल्डिंग. तो प्रोटीन आपका मसल बिल्डिंग भी करता है, राइट? फैट कार्बोहाइड्रेट्स का फंक्शन क्या होता है? टू गिव यू एनर्जी, ओनली एनर्जी. So for listening, you are using your brain cells and using the energy. So all this energy, even when you are sitting, तब भी आपकी बॉडी फंक्शन कर रही है. आप कुछ भी मत करो, तब भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खाना डाइजेस्ट कर रहा होगा. Your kidneys, it will be filtering out the blood to make the urine. That is the carbohydrate which supplies energy. The only and important function is basically your the carbohydrates ही करते हैं, right? Then we have they supply 1 gram of carbohydrate. It supplies 4 kilocalories, right? So कितना energy देता है? So whenever you are consuming 1 grams of the carbohydrate, so any carbohydrate, you are getting 4 kilocalories. This is the energy that it is supplying. Again, carbohydrates ko generally, like if you talk to the people, they generally call it sugar as well, right? Because the glucose is the major part of the carbohydrate. So in layman terms, so as the name suggests, अब इस बोर्ड को हम लोग समझते हैं carbohydrates, hydrates of carbon, right? So which means इसका नाम ही आपको बता रहा है कि it has 3 elements, that is your carbon, hydrogen, and the oxygen. So this is about the carbohydrate. So होता क्या है, carbohydrate आपको energy देते हैं. So we will understand in this unit one thing, what are the functions of carbohydrate,
another thing is how they function in your body. Like there are different types of carbohydrates which are there, and how they function in your body, right? So let me just explain you कैसे. तो आप लोगों ने सुना होगा sugars होते हैं, right? There are sugars which are there. Then we have people call it कि वो भी carbs है, right? So all these carbohydrates they are of different types. So this is the thing that we will be, and which one is good in the like the larger quantities, right? तो वो हम आज सब समझेंगे. So carbohydrates we have two types, simple and the complex, right? Simple, as the name says, this is the simplest or the chota wala. Then we have the complex, which is basically bada and complicated, right? So these are the two types of the carbohydrate, and further they have more divisions, right? So we will understand the first term, which is monosaccharides. So mono means one. So these are the scientific words. हमेशा जो भी scientific words होते हैं ना, they have, you can break down and easily understand them. तो जितने भी scientific words आएंगे, आप उनको बहुत आराम से break down कर पाओगे उनको समझने के लिए. So here, whenever you have any doubt, just put it in the chat box. I will see and revert to that. Okay. So we have monosaccharides. So mono का मतलब होता है one. Mono means one. Saccharide means sugar. So saccharide is basically your sugar. So mono, so those bricks are basically the monosaccharide. तो जो one single brick है, that is monosaccharide. और वो जितना बड़ा बनता जाएगा, जितने आप bricks को combine करते जाओगे, जितना आप bricks को जोड़ते जाओगे, उतना बड़ा आपका structure बनता जाएगा. So that will be your complex carbohydrate or the polysaccharide. So which means single unit is your monosaccharide, और वो जितना आपका बड़ा होता जाएगा, जितना आपका वो बड़ा होता जाएगा, that will be your complex carbohydrates or the polysaccharides, right? So if we talk about the monosaccharides, they have single unit of sugar, which means they are the smallest one. आप लोगों ने, like, since everybody is Indian and most of you are from South India, assuming that, so we have always heard that story. आप लोगों ने बचपन में एक story सुनी होगी कि उसको क्या बोलते हैं, ओके, सो आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी होगी दैट वो वाला जो एक फार्मर होता है एंड ही कॉल्स हिज सन कि ब्रेक द वुड. तो वो जो एक सिंगल स्टिक होता है वुड का, तो वो बहुत इजीली टूट जाता है. और जब वो बहुत सारे, सिंस दे आर द सिंगल यूनिट, तो दे आर को डाइजेस्ट करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है. एंड जब उसी से एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर बन जाते हैं लाइक द पॉलीसैकेराइड्स, so because the digestion becomes take something which is very big, so you will take time to break it down. Digestion process क्या होता है, to break down the food into smaller particles, which starts from our mouth. So हम लोग भी बाइट खाते हैं and what our teeth is doing, mouth से digestion start होता है. So हमारे teeth जो क्या कर रहे हैं, वो food को break down कर रहे हैं into the smaller pieces. फिर वो further stomach में जाता है और small pieces में convert हो जाता है, right? So same way your polysaccharides, since they are bigger, so it takes them for the digestion for the human body. Monosaccharides, they are the smaller ones, they are the single units, they do not take much time for the digestion, right? The next term we have is the disaccharides. अभी मैं इसके examples पे थोड़ी देर के बाद जाऊंगी. So disaccharides, di means two, right? So saccharides means sugar. So saccharide is a scientific term used for the sugar. So mono means one sugar unit, which is monosaccharides. Disaccharides, di means two, though like the two sugar unit. Polysaccharides, poly means multiple, right? So these are the multiple, like the larger numbers of the sugar units attached to each other. So these are the monosaccharides, disaccharides, and the polysaccharides, right? So so these are the mono, di, and the polysaccharides. So let's move on to their examples or the types of the carbohydrates, क्योंकि these are the again scientific terms जो नीचे glucose, fructose, galactose लिखा हुआ है. These are again the scientific terms for the carbohydrates only. So the first example we have is basically the glucose. तो आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम लोग low on energy feel करते हैं, we have one thing that exists as a packaged food. I'm not calling it good, but I'm just giving you an example. So we have Glucon-D. आपने देखा होगा, right? So whenever let's say we are tired, whenever we are tired, whenever we are kind of need some instant energy,
So what do? We generally, there are advertisements for the Glucon-D, that you can have Glucon-D whenever you are going out in summers and all that for the energy purpose, right? So जो आपका glucose होता है, that is a kind of energy giver for your body. तो होता क्या है, हम किसी भी किसी भी तरीके से एनर्जी देते हैं, that gets converted to the glucose. और जो ह्यूमन बॉडी के सेल होते हैं, so there are cell in the human body, they use glucose to make their energy. तो सेल जो होते हैं ना ह्यूमन बॉडी के, so let's understand this as a chemical reaction. So आपकी बॉडी में there are lots and lots of reactions. So आपके जो सेल्स होते हैं वो reactions, मतलब उनके अंदर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं. What they do is they use glucose to convert the energy in their form. जैसे बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी होती है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी. सो सेम वे द बॉडी यूजेस एनर्जी इन देयर फॉर्म. बॉडी अपने ही तरीके से एनर्जी यूज करती है. हम बाहर से उसको फूड की फॉर्म में दे रहे हैं, फूड से वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है एंड देन इट कन्वर्ट्स इट टू देयर फॉर्म. और जो सेट एनर्जी का फॉर्म यूज करते हैं, आई एम राइटिंग इट इन द चैट बॉक्स फॉर द एवरीवन, दैट इज ATP, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. ठीक है. सो आपकी बॉडी क्या करती है, योर बॉडी यूजेस ग्लूकोज. आपका जो भी आपने जिस भी टाइप का कार्बोहाइड्रेट खाया है, आपकी बॉडी उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है और वो ग्लूकोज आपके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो आपके फूड में भी ग्लूकोज होता है. एनीथिंग विच इज स्वीट इट विल हैव ग्लूकोज, राइट. तो वो ग्लूकोज आपकी डायरेक्ट बॉडी के लिए एनर्जी है कि वो डायरेक्टली यूज होगा, बॉडी उसको सीधा ATP में कन्वर्ट करेगी और यूज करेगी, राइट. देन वी हैव बेसिकली द फ्रक्टोज. Fructose, as the name says, it is known as the fruit sugar, and this is the sweetest sugar. Fructose जो होता है, this is the sweetest sugar that exists in nature. तभी बोला जाता है कि आपको जब भी sweets की craving होती है, have fruits, because fructose is again a type of carbohydrate which is there in the fruits. So fructose being the sweetest sugar, fruits में ये बहुत कम quantities में होती है. So it's very less in fruits, though it gives very sweet flavor to the fruits. So fructose is known as the fruit sugar. Every fruit is having some or the quantities of the fructose, right? Galactose में 2 मिनट के बाद बात करूंगी, पहले डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं. So disaccharides, 2 sugar units. So disaccharides में first of all we have okay. So first now I will move on to the polysaccharides first. तो मैं आपको पहले starch समझा देती हूँ. starch क्या होते हैं? So starch क्या होते हैं? Starch is basically the long chain of glucose. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक ब्रिक है, ब्रिक तो आपका ग्लूकोज है, और वो जो बहुत लंबा सा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या वॉल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज बेसिकली योर स्टार्च. सो स्टार्च इज द लॉन्ग चेन ऑफ द ग्लूकोज विच इज देयर इन योर प्लांट फूड्स. तो आपके प्लांट फूड्स में देयर आर स्टार्च विच आर देयर, एंड दोज स्टार्चेस आर बेसिकली योर एनर्जी गिवर्स अगेन. तो डाइजेशन के टाइम पे स्टार्च विल ब्रेक डाउन एनर्जी व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू फॉर्म द एनर्जी. सो द स्टार्च विल ब्रेक डाउन. जब आप डाइजेशन करते हो, स्टार्च विल ब्रेक डाउन टू द ग्लूकोज, एंड देन अगेन ग्लूकोज विल एंटर द ब्लड सर्कुलेशन और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. मूविंग ऑन टू द डाइसैकेराइड्स फर्स्ट. गैलेक्टोज आई विल कवर इन अ वाइल, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको लैक्टोज समझाना पड़ेगा, तभी मैं आपको गैलेक्टोज समझा पाऊंगी. So let's understand the disaccharides first. So disaccharides means the 2 sugar unit. So which means कि ये जो है आपका 2 sugar units combined है, 2 monosaccharides combined है. 2 monosaccharides are combined to give you disaccharides. तो आपके 2 monosaccharides एक साथ जुड़े हैं. Now they are making the disaccharides, right? फिर इसका डाइजेशन कैसे होता है सबका, that I will tell you later, right? So disaccharides में we have again 3 examples. So one is your maltose. Maltose is basically your glucose plus glucose, right? So maltose में क्या क्या होता है? Maltose is made up of 2 glucose units, right? So this is there. Then we have the lactose. So you must have heard lactose is the milk sugar. आप लोगों ने सुना होगा कि lactose is the milk sugar. It is there in the milk. Yes. So lactose is the only lactose only exists in the milk, and it is made up of glucose plus galactose. I skipped galactose, right? So lactose is made up of glucose plus galactose. So galactose as an individual it doesn't exist. वो आपके किसी भी फूड में galactose individually या as a single sugar unit it does not exist.
So तभी मैंने वो नहीं बताया था. So it does not exist in any food, but lactose is the carbohydrate which is there in the milk, and this lactose is made up of glucose and galactose. तो naturally galactose exist नहीं कर रहा है. Naturally galactose does not exist, but lactose is made up of glucose plus galactose, right? And the sources, like the food source for the lactose is the milk. So आपके milk and other milk products are the sources for the lactose, which is a disaccharide. Then we have the sucrose. So sucrose is known as the table sugar. So जो आपका white sugar होता है, that is basically your sucrose. So sucrose is made up of glucose plus fructose. So it comes out, sugarcane or in सब चीज़ों से beet sugar and all that. So sucrose is made up of 2 monosaccharides, and that is basically your glucose and the fructose, right? So sucrose is white sugar. Anything which is sweet in taste, again, it is having the basically a glucose that will be there, and plus majorly in the form of the sucrose, right? So sucrose is table sugar, is in the white sugar. Lactose is the milk sugar. It's there in the milk and the milk products, right? Then we have the maltose. उसका मैंने food sources नहीं बताए थे. So coming to, अब होता क्या है whenever, okay, how digestion happens पहले मैं वो बताती हूँ. So what happens is whenever we consume anything, whenever we are eating any food, so what will happen is we are actually, our digestion process starts from the mouth. So from the mouth you start chewing your food. आपने खाना chew करना start किया, you start the process of digestion, right? जब आप वो digestion का process start करते हो, so again the organs के नाम मैं बता देती हूँ so that you do not confuse yourself. So from the mouth it goes to the food pipe, which connects the mouth to the stomach. So then we have the area which is known as the stomach, which is having the hydrochloric acid and various enzymes which helps you with the digestion. Then we have next part which is basically your small intestine. So होता क्या है, आपका जो digestion होता है, so your digestion that is happening, तो आपका digestion जो होता है वो stomach mouth में start हुआ, stomach में भी digestion ही होता है, and after that, like after that organ, after stomach, we have small intestine. तो हमारे क्या होता है, हमारा होता है small intestine. तो आपका small intestine जो होता है वहाँ पे आपका थोड़ा सा digestion, right? So आपका बचा हुआ जो digestion का process होता है वो, and then ultimately आपका जो बाकी का process होता है like absorption. So अब होता क्या है, till the time, so whenever you are, when you are eating the food, तो वो digestive system में रहता है, organs में रहता है. So the next step is basically your body needs to send those nutrients to your blood circulation. क्योंकि आपकी body में अगर आप देखोगे, everything has their particular space. The only thing which is moving is your blood, right? आपका blood circulation होता है, which is also known as the circulatory system. So आपके जो nutrients होते हैं, they get absorbed. So वो क्या होगा? They get absorbed from your small intestine और वो blood circulation में enter करते हैं. This process is known as the absorption, right? अभी तक digestion हो रहा था, अब आपका absorption होता है, nutrients are now going into the blood and it will reach every cell. So this is the part, this is the process of the basic, digestion which is happening in your body. Digestion में क्या होता है? Digestion में things break down into the smaller pieces. Digestion का मतलब ही break down होता है. So now understand how the things are break. कि उनको टूटने में कितना ही time लगेगा? They won't be taking much time. They are very easily digestible again, right? So they are again very easily digestible, which is your maltose, lactose, and the sucrose. Then we have the polysaccharide, which is the starch, which takes very long time for the digestion because it's the longer chain, right? So that is how the digestion is happening. और जब breakdown होगा तो कैसे होगा? Starch, all the starch will break down into the glucose because it's the long chain of glucose, right? So everything will break down into the many atoms, like 100, thousands of glucoses. Sucrose, how sucrose will break down? जिससे वो बना है, glucose and the fructose. So it will break down into the simpler units, which is your glucose and the fructose. Lactose again. अब बात आती है maltose के food sources की. इतनी कहानी मुझे इसलिए सुनानी पड़ी, else you would have gotten confused. So जब starch break down होते हैं, जब starch का digestion होता है, so imagine you are trying to break down something. अब वो instantly तो टूट नहीं जाएगी. Let's say we are trying to break down the starch and it will be directly converted to the glucose. No. So what will happen is there will be formation of the different chains.
लेट्स से 100 एटम्स की चेन थी, वो कहीं से 3 ग्लूकोज पे टूट जाएगी, कहीं से 10 पे टूटेगी, कहीं पे 2 पे टूटेगी. सो मैल्टोज जो होता है दैट इज कि जब आपका स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, सो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जब 2 ग्लूकोज का चेन बनता है, दैट इज योर मैल्टोज, राइट. सो 2 ग्लूकोज दैट अगेन डज नॉट एग्जिस्ट नेचुरली, वो आपका होता है इन द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डाइजेशन. या फिर जब आप फर्मेंटेशन करते हो. सो फर्मेंटेशन में यू यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फर्मेंटेशन आप सबको पता है, इट्स द प्रोसेस जिससे आप इडली बनाते हो, ढोकला बनाते हो, यू यूज कर्ड का फॉर्मेशन करते हो, यू यूज दोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. आप थोड़े या ईस्ट यूज करते हो एंड उनसे क्या करवाते हो, उनसे स्टार्च का ब्रेक डाउन करवाते हो और वो उसमें गैस फॉर्मेशन करते हैं जिससे कि आपका बैटर जो होता है उसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तभी आपकी इडली सॉफ्ट एंड फ्लफी बनती है, राइट. सो उस प्रोसेस में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब आपके स्टार्च का ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं तो वहां पे भी आपका मैल्टोज का फॉर्मेशन होता है इन दैट बैटर, ठीक है. थर्ड थिंग इज द एल्कोहल फॉर्मेशन. सो whenever you are brewing the alcohol or brewing the different types of alcohol, तो उस टाइम पे भी यू ऐड some microorganisms, या आप ईस्ट के साथ में यू एक्चुअली प्रोड्यूस those microorganisms जो आपके अगेन जो भी फ्रूट्स होते हैं, जिस भी चीज़ की हम लोग बियर बार्ले, वीट, ऑल दोज, उन सब की बनाते हैं. मतलब आई डोंट हैव मच नॉलेज ऑफ अल्कोहल, बट जितना पढ़ा है, जितना सुना है उतना. सो बेसिकली जब ब्रू करते हैं और जब उसको स्टोर करके रखते हैं और उसका भी फर्मेंटेशन करते हैं, तो उस केस में भी आपका जो है बेसिकली again starches are breaking down in the presence of the microorganisms and there will be formation of the chain of glucose जिसमें 2 atoms होंगे. So that is your maltose. So 2 of your the carbohydrates which is your maltose and the galactose, they do not exist naturally. Galactose होता है आपका lactose में, right, which is the milk sugar. Maltose जो होता है that is formed during the different processing of starches such as your fermentation, such as your alcohol formation, such as your digestion which is happening, such as your again sprouting, जो आप sprouts बनाते हो उसमें भी सेम चीज होती है, तभी we call it sprouts में. अच्छा, sprouts कैसे होते हैं? So pulses have their enzymes. So हम जो enzymes होते हैं वो activate होते हैं और वो again starches का break down करते हैं into the smaller chains. That is why we call it ना, हम बोलते हैं कि मूंग दाल खाओगे तो हो सकता है डाइजेशन अच्छे से ना हो, बट स्प्राउट्स खाओगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, राइट. बिकॉज दोज एंजाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन दे गेट एक्टिवेटेड, एंड व्हेन दे गेट एक्टिवेटेड दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन द बेसिकली योर starches which are there in your pulses. और ऐसे Ma'am, please explain sprout again. Okay, so basically food, some of your pulses, they have the enzymes in them. Food enzymes हम उनको बोलते हैं. So वो enzymes क्या होते हैं? Enzymes are basically the kind of catalyst जिनको हम बोलते हैं जो reaction कराते हैं. So what happens is आपका whenever you provide moisture which is your water, जब आप soak करते हो दाल को, and another thing is the oxygen. So those enzymes जो दाल के अंदर जो enzymes होते हैं, they get activated, वो activate हो जाते हैं, and when they get activated, जब वो activate होते हैं तो आपकी दाल में sprouts करना start करते हैं, right? So sprouting में क्या होता है, they actually also start the breakdown of the starch. So वो starch का भी breakdown करने लगते हैं which is there in your दाल, and in that thing आपका जो maltose होता है वो again formation होता है while the process of sprouting, or we call it the germination. तो उस टाइम पे आपका again maltose का formation होगा, right? Thank you, ma'am. दाल आपकी easily digestible हो जाती है. So this is how your maltose is formed in the different foods. Any doubt till here? Then is it safe to say or assume like when polysaccharides they break down during any of the during the process, then always maltose is formed as the byproduct? नहीं, always we cannot guarantee क्योंकि this is the process जो हमने I guess observe नहीं की है. But yes, what happens is we actually say that it is forming and it doesn't matter even if it doesn't form glucose के नहीं भी form होगा, then also it doesn't matter क्योंकि ultimately तो है तो वो glucose ही, so which is very much okay. तो वो 4 की 5 की glucose की chains different length की formation होगी, right? Then we have the next thing which is your okay, so these are the types of carbohydrates जिनके मैंने food examples भी बता दिए. Let's move on to this part जो मैं आपको समझा देती हूँ dietary sources पे, उसके बाद आऊँगी. So simple carbohydrates, as I told you, monosaccharides, mono means one sugar unit, right? And even your basically the disaccharides,
सिंपल जो होते हैं मोनो एंड द डाइसैकेराइड्स, दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट एज आई सेड. और वो भी मैंने आपको बता दिया है कि एवरी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यू नो, वेदर यू आर कंज्यूमिंग स्टार्च, पॉलीसेकेराइड्स, अभी मैं फाइबर और ग्लाइकोजन बाद में कवर करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सो स्टार्च वन थिंग, another thing is your sucrose, lactose, maltose, everything. Whenever we digest carbohydrate, everything is broken down into the monosaccharide, right? क्योंकि break down होके ultimately monosaccharides ही बन रहे हैं. For example, when you break down the starch during the process of digestion, because it's made up of, you know, glucose only, so it will break down into glucose. Then we have the disaccharide, maltose, 2 sugar units. Again, it will break down into the monosaccharides. Lactose, which is made up of galactose and the glucose, again sugar, it will break down into the monosaccharide. Sucrose, again glucose and the fructose, it will break down into the monosaccharides. And ultimately, what happens is, ultimately पहुंच रहा है, that is only glucose. So ultimately, whatever you are consuming, that is getting converted to glucose. Still, some of them are good, some of them are not so good. कैसे? That we have to understand. With the speed of their digestion, let's say, for example, let's say we always say कि small and frequent meals खानी है आपको. Let's say you had poha in the breakfast, you had fruits in the lunch, you had fruits in the mid morning, you had राजमा चावल in the lunch. Let's say मैं आपको सब एक साथ दे दूँ, मैंने पूरा भर के आपको सब एक साथ दे दिया ब्रेकफास्ट में कि आप ये खा लो, पूरे दिन खाना नहीं पड़ेगा, राइट? सो यू विल बी ओवरबर्डन. आप बोलोगे कि क्या है ये, मुझे तो इतना खाने की आदत नहीं है, कुछ ऐसा, राइट? बट अगर वही चीज स्लोली आती रहेगी तो आप सब कंज्यूम करोगे. यू विल ईट फ्रूट्स, यू विल एंजॉय ईटिंग फ्रूट्स, यू विल एंजॉय राजमा चावल, यू विल एंजॉय पोहा, राइट? सो सेम थिंग हैपेंस विद योर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. सो व्हाट हैपेंस इज, because their digestion is not taking much time, their digestion is very easy, they are very easy to digest. तो होगा क्या, they will go to the blood, बहुत easily ग्लूकोज आपका पूरा ब्लड में चला जाएगा और it will give a instant raise to the blood glucose level, which is not good for our body. अच्छा, आपने देखा होगा डायबिटीज में लोग क्या चेक कराते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइट? सो ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना ही अपने आप में इज अ डिजीज व्हिच इज नोन एज डायबिटीज, राइट? अब होता क्या है, so what happens is, how your cell is using the glucose, your cell is using each and every glucose to make ATP, which is energy for the body, human body, right? अब वो formation भी आपका जो है, whenever you will need energy, your cell will use, you know, glucose, और वो आपका ATP formation करते रहेंगे. But there are chances you are overeating, you are not at all utilizing your energy, right? तब क्या होगा, आपका glucose level बढ़ा ही रह जाएगा, बहुत देर तक बढ़ा रह जाएगा, which is the problem, right? So one major thing which is here with the monosaccharides is why they are not good in too high quantities is that they are not at all basically kind of your they are easily digestible and they raise your blood glucose level very fastly. So let's say, just making a graph, how simple sugars increase your blood glucose level this way. This is a graph जिसमें वो instantly blood glucose level raise कर देते हैं because they are easily digestible and they are easily raising your blood glucose level. But वहीं अगर polysaccharides होगा, which means your starch, so what will happen is, आपकी body में blood glucose level धीरे धीरे बढ़ेगा, उतना ही use भी होता रहेगा, which is a good thing. और वो आपको बहुत लंबे टाइम तक एनर्जी देगा, which is again a good thing because वो आपको पूरा in between the meals energetic feel कराएगा. Let's say you had a good heavy breakfast, so it will make you feel fuller. One thing जो कि carbs की properties है ही हैं. Another property of the carbs is it will give you energy, और वो energy आपको काफी stable देगा. So it will start giving you energy after the breakfast, and for good 2 to 3 hours you will feel energetic because you have energy. Your cells are using the energy, and then again it will आपका खाना digest पूरा का पूरा, energy utilized, glucose utilized, then it will slow down. यहाँ क्या होगा, यहाँ एकदम से blood glucose level बढ़ेगा, यहाँ एकदम से blood glucose level बढ़ेगा with the monosaccharides. Now this blood glucose level will be increased and your body will start, you know, utilizing it. And when your body has a signal कि अब इसका कोई use नहीं है, तो वो fat की तरह store हो जाएगा, right? Let's say you are sitting for long hours and you had a really good starchy food. Let's say आलू का पराठा, इससे ज़्यादा starch तो किसी भी उसमें नहीं होगा, आलू and the wheat दोनों starch, you know, rich. Then you had like good 3 to 4 आलू का पराठा, just an example, and आपका जो blood glucose level है वो बढ़ गया, right? या let's say चलो आलू का पराठा तो फिर धीरे धीरे बढ़ाएगा blood glucose level. Let's say you had lots of sugar, आपने बहुत ट्रॉपिकाना का फ्रूट जूस पी लिया,
अब वो क्या करेगा, वो इंस्टेंट शुगर दिया उसने, यहाँ पे पहुंच गया, बहुत हाई एनर्जी लेवल्स दे दिए, नाउ दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। अब आपने जूस पीने के बाद आप सो गए, थोड़ी बहुत एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, जो थोड़ा बहुत हार्ट को चाहिए होगा, किडनी को चाहिए होगा, वो तो बहुत नॉर्मल सही है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन इज योर बॉडी विल थिंक कि आपके ग्लूकोज लेवल को कम करना है, so it will start it storing as fat, तो वो आपका फैट की तरह स्टोर होते 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 जल्दी ही बॉडी उसको यूटिलाइज भी कर देगी, तो उसका स्पाइक होगा ऐसा मोनोसेकेराइड्स का या सिंपल सेकेराइड्स का। एंड आपके जो पॉलीसेकेराइड्स है उनका स्टार्च होगा ऐसा, उनका स्पाइक होगा ऐसा। एंड व्हाट वी वांट इज वी वांट द सेकंड वन, हमें पहला वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए दूसरा वाला, राइट, बिकॉज दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू एंजॉय वन थिंग, क्योंकि हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी तो हमें वो अच्छी लगती है रादर देन गोइंग फॉर द एनर्जी जो हमें बेसिकली इंस्टेंटली मिलती है। until and unless you are playing, until and unless you are you know doing some extreme physical activity, तो तब तक तो आपको बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। Then we have the next thing, which is your monosaccharides. They are sweeter in taste, so that is why we always say okay, so that is why we always say कि आपको क्या करना चाहिए, आपको मोनोसेकेराइड्स कम क्वांटिटीज में कंज्यूम करने चाहिए until and unless you are using a lot of energy। आप जिम से पहले, let's say you are playing, let's say आपको मैराथन में भागना है, you are participating in the marathons, then you need to understand कि अगर आप वहाँ पे कुछ ये कंजम्पशन करोगे then it's very much okay, but अगर आप ये कंजम्पशन वहाँ की बजाय let's say घर पे बैठे हुए कर रहे हो, then ultimately आपका क्या होगा, you will get a lot of energy, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी which you won't be able to utilize, and ultimately it will start converting to the fats, और आपकी बॉडी अगर वो नहीं कर पा रही होगी तो वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा के रखेगी, which is a disease known as the diabetes। वो भी डिपेंड करता है on the various factors, some insulin and everything, which is very much okay, जो आप डिटेल में कवर करोगे in the future classes, but for now I guess this much is enough, right? So you should be consuming very less quantities of the simple carbohydrates। one thing, यहाँ पे fruits लिखा जरूर हुआ है, fruits monosaccharides or simple saccharides, but again one thing I made very clear is fruits, they do have fructose, which is a simple carbohydrate, but it is in very 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 less quantities, being the sweetest sugar, so that is why you can consume fruits but not with the meals, but in as an individual meals, let's say the mid morning snack, right? so वो चीज आप कर सकते हैं। so fruits ऐसा नहीं है, ये मत सोचना कि fruits में fruits में fructose है, which is simple sugar जो कि blood glucose level बढ़ाएगा, तो fruits नहीं खाने चाहिए, no, आपको fruits खाने चाहिए हैं because it has very less quantities of the fructose, which makes it good and healthy। और एक और फाइबर वाला पॉइंट ऑफ व्यू आएगा जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। Then we have basically the polysaccharides, which are very big chains of the glucose, thousands of monosaccharides are combined together to make the polysaccharide, right? Another thing is basically the example starch, cellulose or the pectin। so cellulose or pectin जो होता है, they are the type of fiber, we will be covering that in the tomorrow's class, today if we have the time, right? Then we have, it takes very because they are polysaccharides, they are very it takes them time for the digestion, तो उनको time लगता है digest होने में, they are very less sweeter and they will not give you a spike, so they will raise your blood glucose level but very slowly, which actually makes them the complex carbohydrate। so they are very much found in the dals, your whole grains like your bajra, wheat, millets जो आपके होते हैं, राजगिरा वगैरह, beans and everything, right? so this is basically your complex carbohydrates। coming on to the food sources, तो आपके जो food sources हैं यहाँ पे majorly जो हमने लिखे हैं, that is your the simple and the complex both, but let's focus on to the complex first। so cereals, they are the complex carbohydrates such as your wheat, suji, your different types of the millets and everything, right? again you need to understand one thing here, जितने भी myths होते हैं दो, अच्छा वो तो हम end of this class clear कर ही लेंगे। then we have the other food sources, which is your pulses। तो आपके जो pulses होते हैं, that is your दालें, they have the starch। so people thinking कि दाल्स में starch नहीं होता है और they are protein rich and everything, so anything from the plant foods, they will have the carbohydrates। animal foods में carbohydrates नहीं होता है, but all your plant foods, they have the carbohydrates। then we have the fruits and the vegetables, so every fruit and every vegetable, fruits will have more amount of the fructose to give it the sweetness। nuts and oil seeds, so they also have some amount of the starch,
simple sugars, they are sugar, jaggery, honey, dates, all these things, right? Even your raisins, they are made from the grapes, they are dry. So even your dried fruits, such as your, dried grapes, which is your raisins, dried apricots and everything, they are very without even sugar dipping them or something, so which is very much there. Then we have the milk, which is having the lactose. So yes, lactose is a carbohydrate in the milk, and this is the carbohydrate जो सिर्फ animal food में है, which is your milk, and it is, I won't say it is bad, but some people are allergic to it because we need a specific enzyme in our digestive system. So we have enzymes in the digestive system जो हमारा digestion में help करते हैं. So such as your amylase, which is there for the carbohydrate digestion. We have other enzymes such as lactase for the lactose. So जो भी ASE, जहाँ पर भी end में AS, which is your amylase, lactase, ये सब आ रहे होंगे, lipase. तो ये सब जो है, these are the enzymes which are there for the digestion of the food, and they basically speeds up the digestion process. And some people, they do not have the lactase enzyme, and that is why they are unable to digest the milk or the lactose which is there in the milk. So तभी लोगों को allergy होती है from the milk or the milk products, right? So this is there. Another polysaccharides, another type of polysaccharides include the fibers and the glycogen. So what happens is, so what will happen is, whenever you are consuming the extra carbohydrate, so आप जब भी extra carbohydrate consume करते हो, तो उसका एक storage form होता है. So it has some storage form. So let's say you are consuming. Excuse me, ma'am. Can you just highlight or repeat about the allergy to lactase? Yes, sure. Okay. So what happens is, so we have various enzymes in our digestive system. Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are your, enzymes को हम बोलते हैं biological catalyst. ठीक है? So this is a scientific term which is there. I will write it in the chat box. ज्योति मैं आपका डाउट भी अभी लेती हूँ. Biological catalyst. ठीक है? So catalyst क्या होता है? हम experiments में बोलते हैं catalyst are the things that increases the speed of any chemical reaction. So digestion, it's a kind of chemical reaction in your body. Or catalyst, biological means human body. Catalyst, which means speed बढ़ा रहे हैं. So we have, biological catalyst known as enzymes. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, known as enzymes. They are here in your digestive system. Mouth में भी होता है, stomach में भी होता है, small intestine में भी होता है. Every part of your digestive system for digestion of the various foods. So अलग अलग nutrients के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि आपका amylase किसका digestion करता है? आपका carbohydrates, specifically starch का digestion करता है. ठीक है? Carbohydrates digestion. Same way we have lipase for the lipid digestion. Lipid is basically your fat. So they have that. आप chat box check कर सकते हैं. मैं ये सब terms लिख रही हूँ. Same way we have lactase enzyme for the digestion of the lactose, which is there in the milk. But कुछ लोगों में due to their internal differences, individual differences, we might some people might not have the lactase enzyme. तो उनमें वो lactase enzyme नहीं होता है. Whenever they do not have the lactase enzyme, which means they won't be able to digest the lactose which is there in the milk. So वो जब भी उनका milk का consumption होगा, so they will show the the allergic signs, क्योंकि वो digest नहीं कर पा रहे हैं. जब हम कुछ चीज़ digest नहीं कर पाते हैं तो आपको stomach ache होगा या vomiting होगा या diarrhea होगा. So people actually show all these symptoms. So that is known as the milk intolerance or the lactose intolerance. तो उसको हम generally lactose intolerance बोलते हैं, right? Which is there. Sia, no. No, बाबू, वहाँ पे नहीं जाते. Right. So this is there. Then we have So this is about the milk intolerance. Then we have the glycogen. So I will cover this word first. Then I will take the doubts from the chat box. So we have basically whenever, let's say you're buying something extra. Just an example. So let's say आपने कुछ खरीदा. Let's say you have you bought some wheat flour for your home. 10 kg का packet खरीदा. So what you will do is, you for sure you're not going to use it at once.
So you will store that in an airtight container कि वो कभी बाद में काम आ जाएगा, right? So what you do is you are actually storing it. So same way for the emergency, our body stores the glucose. कि let's say कोई emergency है, let's say you are sitting very normally, you let's say you are fasting. There are lots of festivals in Indian culture, या Monday का fast या Tuesday का fast. You are not eating anything, but still ऐसा तो नहीं होता है कि आपने एक दिन कुछ नहीं खाया तो you are dying because energy नहीं है, right? So what happens is because you have that stored energy in your body, तो आपकी body क्या करती है? Even very lean people, हमारे पास तो फिर fats है जो बहुत ज़्यादा lean लोग होते हैं, even they have that storage of the glucose in the form of the glycogen. So glycogen जो होता है, that is the storage form of the glucose that your body stores for the emergency purpose. So just an example, you are doing very you have a very hectic day, आपने कुछ नहीं खाया और आप बहुत सारा काम कर रहे हो. Let's say in your office, let's say in your home, it can be any function, any party you are attending, and you haven't eat anything और तब भी आपके पास बहुत सारी energy है. Reason being you have the storage of the glucose. Fats तो बहुत last में break down होते हैं energy देने के लिए. आपकी body में जो stored fats होते हैं उससे पहले glycogen काम करने आ जाता है. So glycogen जो होता है, it's the storage form of glucose in your liver cells and the muscle cells. तो आपके जो liver cells होते हैं उनमें, and even in your liver cells and even in your muscle cells, it is very much there. तो वो आपका क्या करता है, वो basically आपका digestion करता है of the so basically वो क्या करता है, जब भी emergency होगी तो उस केस में आपको energy देगा. So let's say आप अभी बैठे हुए हो और अभी एकदम से आ गया है earthquake, let's say just an imagination, right? और you have to run. आपको अब क्या करना है, बाहर भागना होगा घर से. You need that instant energy. तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए बहुत सारी. So that glycogen will give you, क्योंकि फैट्स ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है. So emergency का मतलब होता है कि आपके पास जब भी कोई बहुत instant emergency आती है and you need that energy, then your glycogen, which is the storage form of glucose, it will break down and it will give you instant energy. So let's say कुछ मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं. लेट्स से यू आर स्केयर्ड ऑफ सम एनिमल. लेट्स से यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, आप सड़क पे चल के जा रहे हो, यू बेसिकली सी अ डॉग, आपने कोई डॉग देखा, आप डर गए, यू आर स्केयर्ड. नाउ either you will run or you will basically you need energy for even thinking कि क्या करें. तो वो बहुत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए होगी इफ़ यू आर स्केयर्ड. तो आप जो भी करोगे दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय योर अगेन द ग्लाइकोजन. तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स यूज होते हैं टू गिव यू दैट एनर्जी, और वो एनर्जी आपकी जो है फर्दर आपको basically use होती है. So that is your glycogen storage form in the human body in the muscle or the liver cells. ठीक है. Then we have the next part which is your fiber. फाइबर के बारे में हम सबने बहुत सुना है, स्पेसिफिकली 1990s से लेके तो बहुत ही ज़्यादा दिस इज समथिंग व्हिच इज इन ट्रेंड कि आपको लाइक लेट्स से पहले शायद लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब बिकॉज नाउ पीपल आर हैविंग lots of diseases in India, including heart disease. India is diabetic capital of world and all those. तो हमने fibers की बहुत importance realize की कि they are important, right? So what happens is, अच्छा one more thing, glycogen में एक और चीज़ ऐड करना मैं भूल गई. जितने भी आपने कार्बोहाइड्रेट्स अभी तक किए हैं, they are there in the plant foods. जितने भी मैंने food sources बताए, दाल या कुछ भी, they are very much there in your plant foods. So carbohydrate is a nutrient जो आपके plant foods में ही होता है, not in the animal foods. Even the animals, because animals भी तो plants खा ही रहे हैं ना, so they also get glucose. अब उनका glucose, उनके पास glycogen तो होता ही है, right? Now what will happen is the glucose they will utilize, while जब भी वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, glucose तो they will utilize for the energy purpose, same as we are utilizing, but they have the stored glycogen in their body in the liver and the muscle cells. So somehow we get very smaller amount, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होता है. Whenever we kill the animal, whenever we slaughter the animal, that glycogen gets denatured. तो वो denature हो जाता है, right? तो वो glycogen बचता ही नहीं है. अगर बचता भी है तो it's like only like very less. So that's why even the your animal foods, they are not providing you any carbohydrate. They are not providing you any type of carbohydrate in any form. तो वो ग्लाइकोजन भी आपका डीनेचर ही हो जाता है मैक्सिमम. बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ग्लाइकोजन आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट? देन द नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली हमारा फाइबर. सो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक ऑल दीज कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तभी मैंने वो ग्लाइकोजन और फाइबर को अलग रखा था बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट. ग्लाइकोजन तो फूड्स में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट्स जस्ट देयर इन द ह्यूमन बॉडी इन द स्टोरेज फॉर्म. तो वो आपका इमरजेंसी के लिए एनर्जी होता है. अनदर थिंग इज बेसिकली योर फाइबर. सो फाइबर क्या करता है, फाइबर
is undigestible. So human body is not able to digest the fiber, right? तो आपकी body जो है वो fiber को digest ही नहीं कर पाती. बाकी सब जो polysaccharides, disaccharides, monosaccharides they are digestible, they are providing you energy, but the fiber, it is not at all digestible. So it is also known as the roughage. तो हमारी body में it's known as the roughage. Still हम बोल रहे हैं कि fiber ज़्यादा खाओ, right? So we are saying कि आप लोग fiber ज़्यादा खाओ. So the reason behind that is because it adds bulk to the diet. It makes your diet actually heavy. So try consuming lots of salad before your meals. अब अपनी मील से पहले बहुत सारा सैलड खा लो, आपकी मील का सर्विंग साइज या पोर्शन साइज अपने आप कम हो जाएगा. The reason behind that is basically the part कि आपका roughage प्रोवाइड कर रहा है, बल्क प्रोवाइड कर रहा है, right? So this is basically either we call it the roughage, या हम इसको फाइबर तो बोलते ही हैं, या फिर हम इसको अनअवेलेबल पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली. सो दिस रिमेन्स द पार्ट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का ही पार्ट है, दैट इज वाई हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट कर रहे हैं. बट इट डज नॉट गेट डाइजेस्टेड, वन थिंग. इट डज नॉट प्रोवाइड यू एनर्जी, अनदर थिंग. एंड इट इज, though it is not getting digested, it is not providing you with the energy, but it add roughage to the diet. और जिसकी वजह से आपका क्या होता है, आपका बेसिकली चीज़ें जो है हेल्दी रहती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा. बताऊंगी कैसे कैसे, बट इज इट क्लियर टिल हियर? सिया आ जाओ. सिया नो. सिया नो. Okay. Yes, I'm clear. Okay, great. Yes. So let me just take the doubts which are there in the chat box. Yes, Jyoti, you can have like fruits anytime. Fruits are not at all, kind of problem जो कि आपका होता है, right? So fruits कभी भी problematic नहीं है. As per मतलब मैं आयुर्वेदा पे जा नहीं रही हूँ, because we always are discussing about the modern nutrition. हम लोग तभी ये scientific terms और ये सब चीज़ें use करते हैं. So which is basically आपका आयुर्वेदा के हिसाब से आपका फ्रूट्स का टाइमिंग होता है कि आपको इवनिंग में नहीं खाना होता. बट एज पर मॉडर्न न्यूट्रिशन वी कैन हैव फ्रूट्स एनी टाइम, बट द ओनली कंडीशन इज नॉट विद द मील्स, क्योंकि फ्रूट्स के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. लेट योर मील कंप्लीट विद द सैलड्स एंड द वेजिटेबल्स, बट नॉट विद द काइंड ऑफ थिंग. Meenas, what is aristozymes given for the indigestion? Okay, so aristozymes are basically made up of, it is given for the indigestion, and they are made up of majorly 2 enzymes, जिसमें कि आपका one is diastase and another one is pepsin, जो कि आपका हेल्प करता है पेप्सिन को ब्रेक डाउन होने में एंड आपका स्टार्च को ब्रेक डाउन होने में. सॉरी, आपका प्रोटीन्स, पेप्सिन जो होता है दैट इज द एंजाइम फॉर द प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है और आपका स्टार्च के डाइजेशन में करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज गिवन फॉर द इंडाइजेशन. सो एरिस्टो एंजाइम्स, एज द नेम सेड्स, इसमें एंजाइम्स हैं जो आपका डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं. And Rice. fruits not to be taken empty stomach also. Empty stomach not per our thing, not per the modern nutrition for sure. As per Ayurveda ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. सो आई वॉन्ट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एज पर आयुर्वेदा हमें बेसिकली नहीं करना, मतलब फॉलो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप आयुर्वेदा मॉडर्न न्यूट्रिशन को कंबाइन भी करोगे देन ऑल्सो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम. Some of the fruits like apple, just add on to some juices or some other things, but not a fruit as such. Like in one of our videos of this app also, they have advised that apple taken empty stomach, so it will be more acidic for. Yes, so basically एप्पल क्या करता है, एम्प्टी स्टमक काफी लोगों को, लाइक मैक्सिमम लोगों को गैस फॉर्मेशन करता है, तो दैट इज व्हाई इट्स नॉट मच एडवाइजेबल. तो हाँ, वो चीजें आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बहुत बार देखने के लिए मिलेंगी. I think only citrus fruits should not be consumed on an empty stomach. Other fruits can be consumed, I guess. Citrus fruits. Yeah, citrus fruits देखो, it depends on the individual differences. Generally, जैसे कि आपका बहुत you have to go with the conditions, like favorable conditions as well. Citrus fruits also, yes, empty stomach we do not much advise. हम आपको vegetable juices वगैरह बोलते हैं कि आप ले लो. Even your Yes. papaya, that works, empty stomach. But हाँ, कुछ fruits में आपको देखने के लिए मिलेगा apple in the 80 to 90% of the people will cause gas or acidity. तो इसलिए it's not advisable. तो हाँ, वो individual differences देखते हुए और उनका effect देखते हुए हम मना जरूर करते हैं, but हम ये नहीं बोल रहे कि कोई भी fruit नहीं लेना, but हम ये भी नहीं कह रहे कि सब लेने हैं. So it's like that. Okay, fine. Mom, one question. So when we say, there was a following question कि fruits रात को नहीं खाना चाहिए, तो the logic that they give is क्योंकि रात को digestion अपना बहुत slow होता है, तो उसका fruits का जो glucose है, it gets converted to I think glycogen then, and glycogen is stored for long because let's say it's a sedentary lifestyle,
So it gets converted to fats. So is it again a myth or is it like it's an Okay, actual? okay. So basically here you need to understand the logic first thing, क्योंकि maybe हो सकता है ये reason होगा, but the reason we have to correct here is the statement. तो होता क्या है, whenever you eat all these things, whenever you are consuming carbohydrates, they will be converted to the glycogen. Glycogen store हर human में होगा, be it any condition, वो चाहे sedentary lifestyle हो, वो चाहे कोई भी lifestyle हो, कुछ भी हो, right? First thing. Another thing is glycogen store होना is not at all bad. So which means glycogen अगर आपका store हो रहा है, that is a good thing because we need it for the emergency purpose. Fats break down होने में time लगता है, तो हमें जब भी instant energy चाहिए होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका glycogen कर पाएगा. Third thing, अगर बहुत excess आपको carbohydrates मिल रहे हैं, so what happens is whenever you are consuming lots of carbohydrate, the first stage is कि आपकी body अगर थोड़ा सा carbohydrate है, your body will utilize it for the energy. One thing. ठीक है. Now the second thing is जब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होगा, इट विल बी कन्वर्टेड टू द ग्लाइकोजन. अब ग्लाइकोजन का भी लिमिटेशन है. लेट्स से आपने 10 kg का वो जो व्हीट फ्लावर खरीदा था, जो मैंने एग्जांपल भी दिया था इन केस ऑफ ग्लाइकोजन, लेट्स से यू बॉट अ 10 kg ऑफ व्हीट फ्लावर. आपने क्या किया, आप जितना यूज कर सकते थे 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, 1 kg, यू यूटिलाइज्ड इट एंड यू हैव अ कंटेनर व्हिच इज ओनली ऑफ 5 kgs. आपने क्या किया, जितना यूटिलाइज किया, लेट्स से 1 kg आपने यूटिलाइज किया, 5 kgs आपने उस कंटेनर में फिल करके रख दिया, बट उसके बाद भी आपका 4 kgs बचा. मतलब इमेजिन देयर इज अ कंडीशन कि उसके बाद भी बच गया. अब वो क्या है, अब वो बहुत एक्स्ट्रा हो गया आपके लिए. सो सेम वे फॉर योर बॉडी, आपका जो नॉर्मल सा आया वो आपने यूज किया फॉर द एनर्जी, थोड़ा एक्स्ट्रा था तो आपने वो एयर टाइट कंटेनर में रखा, स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, आपने लिवर और मसल सेल्स में उसको स्टोर कर दिया फॉर द इमरजेंसी, विच इज गुड थिंग. आपको लेट्स से लॉकडाउन है और भूख लगी है, या घर पे कोई, या लेट्स से डिलीवरीज बंद हो गई और आपको भूख लग रही है, यू हैव दैट व्हीट फ्लावर जो आप इमरजेंसी में बना के खाना खा सकते हो. सो इट्स गुड टू हैव दैट 5 kgs ऑफ व्हीट फ्लावर. Now that extra 4 kgs of wheat flour, वो तो आपके लिए, वो तो खराब भी हो सकता है, उसका तो कुछ यूज ही नहीं है अभी के लिए आपके पास, और स्टोरेज के लिए भी कुछ नहीं है. So अब क्या होगा, that 4 kgs basically your very extra glycogen जो फैट्स में कन्वर्ट होगा और उसको फैट सेल स्टोर करेंगे. So which is bad, वो आपका बहुत खराब है. So glycogen is not at all bad, वो आपको ध्यान रखना है. And the another thing which is bad is basically very extra glucose which is there and जो आपका ultimately फैट्स में कन्वर्ट होगा. तो जनरली हम लोग जो ये बोलते हैं ना, रात में फ्रूट्स मत खाओ या कुछ ऐसे एडवाइजेस, जनरली मेजरली वो उस पार्ट पे होते हैं कि आप क्या करते हो, आप मील्स के साथ फ्रूट्स भी खाओगे. मील्स ऑलरेडी इंडियन मील्स या जो भी मील्स होती हैं, दे आर कार्ब बेस्ड, राइट. जब वो कार्ब बेस्ड होती हैं, उसके साथ में आप और भी फ्रक्टोज या फ्रूट्स दे रहे हो बॉडी को, तो अल्टीमेटली आपका जो ग्लूकोज लेवल है उसको स्पाइक मिलेगा. सो दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन. अनदर रीजन कैन बी डाइजेशन स्लो होता है, वन थिंग. और आपका जो फाइबर होता है which is there in the fruits, उसका डाइजेशन होने में भी टाइम लगता है, and that needs water for their part. वो अभी आएगा आगे, soluble fibers and everything. So वो सब चीजें जो आपको चाहिए होती हैं, that can be one of the conditions कि आपको जो है ultimately kind of वो करना होता है कि हाँ आप मत खाओ रात को fruits. So that can be one of the reason. और meals के साथ तो fruits advisable ही नहीं है. So that is again one thing which is there, right? So this is the part. Another thing is कि okay, rice at night. So there is a concept which is known as glycemic index. So what I would like is आप लोग थोड़ा glycemic index के बारे में पढ़ना, बाकी मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ. So glycemic index is the ranking of the food. So हमने क्या किया, फूड को एक रैंकिंग दी है कि वो कितना इंस्टेंटली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ाते हैं. ठीक है. सो लेट्स से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना इंस्टेंटली बढ़ाते हैं, दैट इज देयर. So just an example, let's say the simple sugar, white sugar, that increases your blood glucose level very instantly, right? So that is having the low glycemic index. तो जो low glycemic index वाले food होते हैं वो generally हमें नहीं खाने चाहिए, right? So same way, sorry, जो high glycemic index वाले foods होते हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे कि आपका, क्योंकि they are instantly raising your blood sugar level. So same way, your white rice, they have high glycemic index which will instantly increase your blood glucose level, and which is not suggested if you are trying to manage your weight, one thing. Another thing, even if you are trying to manage your diabetes, so in situations where it's good to have brown rice or the parboiled rice because they have much higher amount of the fiber, which makes it healthier for the consumption, right? Yes, Hemant. What is the difference between glycemic index and glycemic load? ओके. सो ग्लाइसेमिक, वैसे तो आप ये सब चीजें इन डिटेल कवर करोगे इन फ्यूचर. सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड में इस डिफरेंस होता है. ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज फॉर द फूड, ग्लाइसेमिक लोड इज फॉर द बेसिकली द मील. तो हम लोग ग्लाइसेमिक लोड में सर्विंग साइज भी देखते हैं. लेट्स से देयर इज अ फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
हाई है वो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, बट उसकी हम लोग कंजम्पशन कम क्वांटिटीज में कर रहे हैं. सो लोड इंक्लूड्स बोथ द थिंग कि वो उसका जीआई कैसा है और प्लस द क्वांटिटी ऑफ द फूड. लेट्स से द वाटरमेलन इज हैविंग द हाई जीआई, बट हम क्वांटिटीज उसकी बहुत कम कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी बहुत ज्यादा होता है. सो दैट्स व्हाई द ग्लाइसेमिक लोड ऑफ द वाटरमेलन इज लेस. तो जिसकी वजह से इट मेक्स इट हेल्दी. सो लोड इज बेसिकली ऑफ द मील और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज जस्ट द रैंकिंग ऑफ द फूड व्हिच इज देयर. बट मैम एक अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज थी जिसमें बताया था दाल चावल को बेस्ट मील के तौर पे बताया गया था, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स चाहे उनका चावल का ज्यादा हो, बट दाल मिलने के बाद ग्लाइसेमिक लोड उसका काफी कम हो जाता है. तो अंडरस्टैंड रीजन बिहाइंड दैट इज चावल जो राइस होता है इट इज हैविंग मोर ऑफ द स्टार्च व्हिच मेक्स इट उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा, जिसकी वजह से वो ब्लड ग्लूकोज लेवल जल्दी बढ़ाएगा. बट दाल में क्या होता है, इट हैज प्रोटीन, इट हैज फाइबर, जिसकी वजह से फाइबर मेजरली क्या करता है आपका ग्लाइसेमिक लोड कम कर देता है किसी भी चीज का. सो व्हाट विल, क्योंकि वो फाइबर आपका क्या करता है, फाइबर आपके डाइजेशन के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली रेज नहीं होगा. सो एज आई सेड कि ग्लाइसेमिक लोड मील्स का होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडिविजुअल फूड का होगा. सो लोड का मतलब हुआ कि अब क्या हुआ, आपके चावल में आपने विद दाल प्रोटीन्स और आपका जो फाइबर है वो दोनों चीजें ऐड कर दी, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ योर ब्लड ग्लूकोज विल नॉट इंक्रीज इंस्टेंटली. दैट्स द रीजन बिहाइंड दैट. सो तभी हम लोग वी नेवर से मतलब हम लोग अगर पुलाव वगैरह भी बोलते हैं खाने के लिए, सो वी ऑलवेज ट्राई टू ऐड सम सोयाबीन और समथिंग टू इट व्हिच इज प्रोटीन रिच एंड फाइबर रिच, सो दैट आपका ग्लाइसेमिक लोड हम लोग जो है उस मील का कम कर दे. Madam, what are the in routine or ratio or proportion of carbohydrates and proteins in pulses? Okay, so basically, for a healthy meal, वो तो आप पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे, right? So what will happen is आप पूरा कैलकुलेशन सीखने वाले हैं ऑफ द डाइट. तो आपका जो थ्रू आउट द डे परसेंटेजेस होते हैं, जब आप बैलेंस्ड मील बोलते हैं या बैलेंस डाइट बोलते हैं थ्रू आउट द डे, so it has the proportion which says your 40 to 50% should be the carbohydrate in your meal maximum, right? Then your proteins, which should be somewhere around 15 to 20%, and then is your fats, that should be somewhere around 20 to 25%. So this is the ratio. These are the percentages कि इतना आपका होना चाहिए throughout the day. जब आप पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे ना थ्रू आउट द डे, लेट्स से आपने 2000 किलो कैलोरीज की डाइट ली, जस्ट एन एग्जांपल, सो उसमें 40 टू 50% आपका कार्ब से एनर्जी आना चाहिए, 15% आपका प्रोटीन से आना चाहिए, 25% आपका फैट से आना चाहिए. सो ऑल दैट विल बी टॉट. मैम मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पल्सेस जो है वो सीरियल्स एंड पल्सेस है. सो ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड एस्पेक्ट आई एम आस्किंग कि रूटीन में जो पल्सेस है उसमें किस चीज की ज्यादा है, कार्ब्स ज्यादा होंगे या प्रोटीन्स ज्यादा है? वैसे मिक्स में तो हम प्रोटीन्स बोलते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में यस. ओके, सो बेसिकली जैसे दालें आपकी होती है, सो इट विल हैव, क्योंकि वो है तो प्लांट बेस्ड ही, तो अब होता क्या है, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन फूड विल गिव यू द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. तो एक फूड आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देगा एक साथ. सो व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द दाल, ठीक है, दाल, और लेट्स कंपेयर टू वीट में आपका क्या होगा, प्रोटीन बहुत कम होगा, बट वहाँ पे होल व्हीट में फाइबर बहुत अच्छा होता है, आपका स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अल्टीमेटली हमारे होल व्हीट का इतना नहीं होता है, लाइक कम ही होता है, राइट? बट व्हेन वी और बाकी लेट्स से विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब भी होंगे कुछ क्वांटिटीज में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द दाल्स, तो उसमें स्टार्च एज कंपेयर टू द होल सीरियल्स थोड़ा कम होगा और प्रोटीन बहुत ज्यादा होगा. सो 1 ग्राम, so if I talk about the dal, so almost your 30 grams of dal, yeah, let's say 100 grams of dal, it somewhere around gives you 20 to 24 grams of protein. और वहीं अगर मैं wheat की बात करूंगी, it only gives you somewhere around 7 to 8 grams of protein. तो वो प्रोटीन तो एकदम आधा है. स्टार्च इनमें दोनों में ही होगा, कार्ब्स में बहुत ज्यादा होगा, यस, फॉर व्हीट में बहुत ज्यादा होगा, प्रोटीन में थोड़ा कम होगा, बट बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होता. तो ऐसा नहीं है कि जब आप दाल नहीं खा रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट्स तब भी मिल रहे हैं, एंड यू विल डू द होल कैलकुलेशन फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल इन योर डे. सो वो भी आपका रहेगा. When you're talking about this starch and carbohydrates, you mentioned that soya bean is a good source of fiber plus protein and everything. So there is a controversy that is going on. Is soya bean good or not? Because people say it does not contain any food value. It's just the roughage that we are consuming. So is it okay? It is good. It is good because it has, ऐसा कुछ मतलब लोग बोल रहे होंगे, बट समहाउ वो सोया चाप्स वगैरह के लिए है कि हाँ, चाप आर नॉट मेड अप ऑफ एग्जैक्ट सोयाबीन, दे आर मेड अप ऑफ द रिफाइंड फ्लावर एंड ऑल इज मिक्स्ड. बट सोयाबीन, इफ आई टॉक अबाउट एज होल सोयाबीन, दैट इज गुड. मतलब वो तो आपका प्रोटीन रिच है ही है. I mean, soybean that nutri chunks, not the white wala soybean. हाँ, nutri chunks, not the white.
बट मैम न्यूट्रीचंक्स का मैंने सुना है कि वो काफी केमिकल प्रोसेस से प्रोसेस होते गुजरता हैं, है. वो जब उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो थोड़ा प्रोसेसिंग तो होता ही है फॉर श्योर. द होल बीन्स जो होते हैं सोया के, दैट इज बेस्ट. उसके बाद फिर जो होता है वो तो थोड़ा बहुत फिर प्रोसेसिंग से बन ही रहे. और चाप तो अल्टीमेटली वेरी प्रोसेस्ड है ही, जिसको लोग हेल्दी फूड समझ के खा ही रहे होते हैं कि हाँ हम बाहर खा चाप रहे में हैं तो healthy 80% खा रहे मैदा हैं. होता है. एग्जैक्टली राइट. सो विच इज नॉट रिकमेंडेड. यस, जो आपके जितना प्रोसेसिंग होता जाएगा वो उतना ज्यादा आपका मतलब बेसिकली होता जाएगा. बेस्ट पार्ट इज बेसिकली द बीन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ सोया. सो वो जो दाल होती है सोया वाली वैसे सा. Okay, so अच्छा, any other doubt? Minaz, why do we need this? Proteins अपने आप, अच्छा proteins अपने आप digest हो जाते हैं, but that depends on individual differences as well. किसी को किसी pulse और generally with the age, generally with the stomach acid. So these are all basically gastrointestinal problems. So उसमें हमें पता लगाना पड़ता है कि what are the different issues with the person अगर proteins digest नहीं हो रहे हैं तो, और फिर उसके लिए हमें treatment या जो भी solution होता है that we have to look out for. Right, before covering the fibers, क्योंकि फाइबर मैं आप लोगों के साथ कल करना चाहती हूँ. I will cover some functions of the carbohydrates. So we have the function start नहीं करती, but I will do is क्योंकि अभी मैं ये कर लेती हूँ आपके साथ. So there are different okay, so what let's have some questions or some few discussions that we already had. So what do you think carbohydrates do for the human body? Provide energy. Provide energy. Provide energy. Yes, so basically they do provide energy for the human body, building muscles, that is the function of the protein, and making the bone strong, that is the function of one of the mineral, which is your basically calcium ka function. All carbohydrate foods are composed of the elements All of the above. All of the above. carbon, hydrogen, and oxygen. Yes, all of the above. Another name for the complex carbohydrate is starch. Starch. Starches. Great. So starch, which is there. Sucrose is mono, di, या polysaccharide. Disaccharides. Disaccharides. Lactose consists of which of these? Glucose and galactose. Glucose and Galactose. galactose. Glucose and galactose. Okay, so we have various myths which are there, that we need to take care of and that we need to make sure कि हम लोग उनको थोड़ा कम कर दें in the market. So let's say there can be a myth that only breads and the grains they contain the carbohydrates, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि breads और cereals इन्हीं में ही carbohydrates होता है, so which is not at all true. All your foods which are coming from the plants, even your vegetables, even some difference होगा, root vegetables में ज़्यादा होगा, such as your potatoes, sweet potatoes, but बाकी में भी आपका जो है carbohydrates होगा ही होगा, right? So every plant food you are consuming, it will have the carbohydrates. Quantities will differ, जिसकी calculations हम लोग for sure करना सीखेंगे in your while making your diet plans. Then we have the carbohydrates are fattening. So some people have myth around. Even one of my recent client, मतलब ये तो मैं बहुत recent का example बता रही हूँ, and like a young person, maybe somewhere around 26-27. So he told me that so he basically told me that ठंड में तो सब्जी के option ही नहीं है. I was like, what? बहुत सारे options है. You have all those gobi, gajar and everything. So he was like, बिना आलू के कोई option नहीं है और आलू तो खाना ही नहीं चाहिए when you are on your weight loss journey. So I was like, it's a myth. You can have आलू फॉर श्योर, वहाँ पे आपको अपना पूरा मील जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी मिथ्स होते हैं, बिकॉज पोटैटो इज नॉट काफी कि लो कार्ब डाइट खाएंगे तो वो हेल्दी रहेगी, वो काफी अच्छी रहेगी, विच इज अगेन नॉट एट ऑल ट्रू. हमें कार्ब्स जो है वो नॉर्मल कंजम्पशन करने चाहिए मील्स के अंदर.
so that आप जो है ultimately you are having a good healthy meal. Then the carbs cause inflammation. There are myths again around few of your foods that you should not be consuming the carbohydrates. They cause inflammation in your body. They cause redness. They cause swelling in your body, redness in your body, and it impacts your digestive system and all that. So these myths you will hear. So लोगों को आप देखोगे gluten free जा रहे हैं और even if they are not feeling any problem with the gluten या wheat, तब भी वो gluten free जा रहे हैं कि wheat तो inflammation कर रहा है. So always make sure कि these are the myths which are there. Yes, gluten intolerances होती है लोगों में, which you have to see. Blood test भी होते हैं food allergies के, you can go for that, but do not stop suddenly कि हाँ अब आपको इससे problem हो ही रही है, stop it. तो वो बिना testing के बिना चीजों के मत करना. Then people have myth कि avoid some fruits because they have high sugar content. So few of the fruits they have the glycemic index, high glycemic index, like medium to high GI fruits are there. But again, they should not be consumed with the meals. They can be consumed as a meal itself. जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ भी fruit, let's say watermelon या mango या जो बहुत स्वीट फ्रूट्स होते हैं, मेलन्स या बनानास, तो ये सब आपको मील्स के साथ नहीं खाने होते हैं कि हमने लंच किया फिर मीठा खा रहे हैं तो मैंगो खा लिया, विद जनरली पीपल डू इन इंडिया. तो आपको क्या करना होता है, आपको एज अ फ्रूट वो खाना है, और जनरली कब खाना है आपका मिड मॉर्निंग में या इवनिंग स्नैक की तरह भी आप खा सकते हो. 4 बजे चाय को स्किप करके यू आर हैविंग दोस फ्रूट्स, या 11 ओ क्लॉक के अराउंड जब आपने ब्रेकफास्ट किया हुए बहुत टाइम हो गया और लंच में भी बहुत टाइम है और आपका मिड मॉर्निंग स्नैक है 11 के अराउंड. सो उस टाइम पे यू कैन हैव द फ्रूट्स और वो बिल्कुल आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करेंगे. Then we have people have myth कि sugar free का मतलब है carb free, which is again not true. Sugar free का मतलब है उसमें simple sugars नहीं है, carbs still हो सकते हैं. Again, people think all carbs are the same irrespective of their sources. तो ऐसा नहीं है. Complex carbs are different. Simple carbs are the good ones. So वो सब चीजें आपको समझनी होगी. Then we have a myth around which is all simple carbs are bad and all complex carbs are good. Somehow it's true क्योंकि simple carbs आपका they are not at all much required, but again we need to understand वो किसी condition में required हो सकते हैं. Let's say there is a sports person जिसका बहुत ज़रूरी मैच है, जिसको बहुत अच्छे से एनर्जी चाहिए और बहुत instant energies भी चाहिए, right? So that in that way you need the sugars. So आपको वो सब चीज़ें देखनी है कि there will be the timings जब sugar required होगा. There will be the timings जब आपको simple carbs देने पड़ेंगे लोगों को. Let's say the gym workers, let's say the different sports person. तो वो सब चीजें you have to understand and you can give accordingly. तो वो सब चीजें आप जब डिटेल में करोगे so you will understand कहाँ पे किसी sports में आपको instant energy देनी है. So you will go with this part, right? So this is there. Then again the carbs make you feel tired. आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि खाना खाने के बाद सडनली नींद आ जाती है. विंटर्स में तो बहुत ही ज्यादा, जनरली समर्स में भी आई जाती है. यू हैव सम गुड कार्ब रिच मील और आपको नींद आएगी, which is true. बट उसका मतलब वो नींद कब आती है, जब आप ओवर ईटिंग करते हो. जब आप उतना ही खाते हो जितना रिक्वायर्ड होता है तब आपको नींद नहीं आएगी. वन थिंग. अनदर थिंग, योर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंस्टेंटली बढ़ेगा तब आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है या ब्लड ग्लूकोज लेवल है दैट विल मेक यू फील स्लीपी एंड टायर्ड. अगर आपका बहुत नॉर्मल इंटेक होगा, ओवर इंटेक नहीं होगा, तब आपके कार्ब्स आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे. सो मेक श्योर ऑफ दिस थिंग. Cut down on carbs in the evening. So some people, I go when I meet different types of people or the different clients are coming, तो वो आते हैं with all these myths कि रात को तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, चावल भी नहीं खाने चाहिए, मैं सिर्फ सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, सो जाता हूँ, सूप पीता हूँ, सो जाता हूँ, पनीर खाता हूँ, सो जाता हूँ. So all these myths. So make sure कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है. It should always be a balanced diet क्योंकि आपकी रात की मील भी हेल्दी होनी चाहिए with the energy. Reason being आपकी next meal जो है after 8 hours होगी. So आपकी मतलब it should be a good balanced meal, not heavy but balanced meal. So आपको वो make sure करना होता है. These are the myths which exist around the carbohydrates which are there that we have talked of. What we will do is we will tomorrow जो भी आपके साथ class है मेरी, so उसमें we will be doing the fibers, different types of fibers. So we have 2 types of fibers, soluble fiber and the insoluble fibers. So हम वो cover करेंगे. Another thing will be the functions of the carbohydrates. Although we have, somehow discussed them, but we will discuss them in detail, right? So one thing I would like is कि आप लोग कल जो है अपना glycemic index के बारे में जरूर थोड़ा सा glycemic index and even the glycemic load थोड़ा पढ़ लेना. इतना कुछ वैसे है नहीं कल की क्लास में इससे related, but still for your clarity, for your understanding, क्योंकि terms आ चुके हैं, so just read about them and if you have any doubts you can ask me. Any doubts for now?
मैम डिनर और स्लीपिंग टाइमिंग का क्या कंसेप्ट है कि बोलते हैं ना 3-4 घंटे पहले ही खाना चाहिए स्लीपिंग से ओके सो बेसिकली होता क्या है, जब आप खाना खाने के बाद एकदम से सो जाते हो, सो व्हेनेवर यू फील लाइक कि आपको खाना खाने के बाद एकदम सोना है, तो उस केस में क्या होता है, जस्ट इमेजिन यू हैव रिसीव्ड, आपकी बॉडी डाइजेशन कर रही है उस टाइम पे वन थिंग, सो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल विल समहाउ कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो अगर आप बैठे हुए हो या यू आर डूइंग समथिंग, तो वो एनर्जी लेवल उतना यूटिलाइज भी होता रहेगा और वो फैट की तरह स्टोर नहीं होगा, वन थिंग। एंड अनदर थिंग जो सबसे बेसिक चीज है, दैट इज कि व्हेनेवर जस्ट आफ्टर द मील्स आप लेट जाते हो, व्हेन यू लाई डाउन जस्ट आफ्टर द मील्स, तो उस कंडीशन में आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, डाइजेशन का फूड का जो मूवमेंट होता है, अब आप बैठे हुए हो, फूड का मूवमेंट इज टुवर्ड द ग्रेविटेशन ओनली, फॉर श्योर आपका स्टमक और इन सब में पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो फूड को पुश करते हैं टुवर्ड्स योर स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। बट आप कभी ट्राई करना, आप खाना खाने के बाद जस्ट लेट जाना, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको अपने आप ही वॉमिटिश फील होगा, क्योंकि वो फूड आपको लगेगा कि स्टमक में ही है या स्मॉल फूड पाइप में ही रह गया, क्योंकि वो फूड का मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है फॉर द डाइजेशन पर्पस। दैट इज अगेन वन ऑफ द रीजन व्हिच इज देयर। At the same time, ma'am, it's sometimes people advise to go on walk after the meal. So it should be a moderate activity, not a significant activity. Do not go for the brisk walk, क्योंकि वो आपका अगेन क्योंकि आपको डाइजेशन के लिए एनर्जी चाहिए होता है। सो वी डू नॉट वांट एनर्जी टू गो, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते हम उस टाइम पे, हम चाहते हैं कि डाइजेशन के लिए भी अच्छे से एनर्जी मिले right after the meals. So what we advise is you can sit in the Vajrasana, one of the best position after having the meals. Another part is the slow walk. बिल्कुल भी ब्रिस्क वॉक या फास्ट वॉक नहीं करना होता है, गो फॉर द स्लो वॉक्स, क्योंकि वो आपका डाइजेशन फूड का मूवमेंट एक तो मेंटेन करेगा, अनदर थिंग इज कि थोड़ा बहुत जो ग्लूकोज लेवल होता है वो यूटिलाइज भी करता रहेगा। Right. Any other doubt for now? Idea of power naps post noon. Idea of power naps post your meals? Yeah, noon meals. Noon, okay. Lunch. So so basically you need some time of rest to basically हम भाई थोड़ा आपको रिलैक्स चाहिए होता है, नैप नहीं चाहिए होता, बट जस्ट a kind of relaxation after your meals, जो हम कहते हैं, रीजन बीइंग अगेन फॉर द डाइजेशन, ताकि आप अपनी एनर्जी डाइजेशन के लिए ही यूज करो, नॉट फॉर सम अदर एक्टिविटी। नैप लेटना है अगर आपको, तो मे बी आफ्टर हैविंग मील्स 1 घंटे बाद, नॉट बिफोर दैट, नॉट जस्ट आफ्टर द मील्स। आप ले सकते हो पावर नैप, हम लोग बोलते हैं कि आधे घंटे का आपका रेस्ट होना चाहिए in between the day, so that you can relax वो चीज, but not nap is not at all required. And unless you have like a lot of physical activity जिसकी जो आपको चाहिए ही चाहिए आफ्टर मील्स, वो भी आपको मेक श्योर करना है कि सून आफ्टर हैविंग मील्स तो लेटना ही नहीं है, आफ्टर 1 hour आप लेटना है तो लेट सकते हो, या पावर नैप लेना है तो ले सकते हो। मैम ऐसे भी तो बोलते हैं कि आफ्टर पोस्ट मील जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो स्पाइक करता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और दोपहर में तो वो होना चाहिए कि आफ्टरनून टाइम में कि थोड़ा रेस्ट लेना ही चाहिए आफ्टर मील। और देखो हमारा ब्लड प्रेशर आई वोंट कॉल इट, हमारा ब्लड सप्लाई इंक्रीज होता है, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, दैट इज वेरी ट्रू। सो वो उसके लिए आपको रिलैक्स करना चाहिए, नैप इज नॉट द राइट वर्ड जो मैं बोलूंगी। आप लेट्स से आपने खाना खाया, यू कैन एक्चुअली आपको वज्रासन में बैठना भी वो रिलैक्स करने जैसा ही है, या फिर आप 10-15 मिनट्स का गुड वॉक यू कैन टेक, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, आपको कहीं और मतलब किसी काम में बिजी नहीं होना, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस वो रिलैक्सेशन देना है, वो भी लाइक मे बी हाफ एन आवर, नॉट मोर देन दैट। नैप्स वाला आइडिया इज नॉट एट ऑल सजेस्टेड, क्योंकि आपको नहीं चाहिए, इफ यू आर मीटिंग दैट 8 hours ऑफ स्लीप एट नाइट, तब तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ, yes. Sorry, no, go ahead, please. And that depends on your physical activity too. अगर आपका बहुत एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी है जो सुबह 4 बजे से शुरू होता है, then you can obviously have the rest. तो वो इंडिविजुअल आपका फैक्टर भी ऐड हो जाएगा उस केस में। मैम जैसे कहते हैं कर्ड बिल्कुल ही खाने के साथ नहीं खाना, either take it before or after. Okay, so what happens is there are, as per the modern nutrition, there are nutrient interference, so which means there are chances कि 2 nutrients साथ में absorb नहीं होंगे, one nutrient will affect the absorption of the other. So what do we say is, अच्छा इसमें भी दोनों ही parts आ जाते हैं, one is Ayurvedic, one is basically modern nutrition. So with the modern nutrition we say कि आपका generally आपके जो wheat होता है उसमें phytate होता है,
या wheat या rice, जो भी आपके cereals होते हैं, they have cereal and pulses, they have phytate content which actually interfere with the absorption of the calcium. So that is why we say कि आपको बहुत मतलब curd meals के साथ लेने की जरूरत नहीं है. लेना भी चाहते हो as per balanced meal, क्योंकि you know as per the US culture आप ले सकते हो in normal quantities. दूसरी चीज है, if I come with the Ayurveda point of view here, another thing will be कि आपका दही का जो टेम्परेचर होता है वो होता है ठंडा. आपकी मील्स होती है वार्म, गरम, आपका गरम दाल है, गरम रोटी है, एंड दही इज ठंडा, तो वो टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है. सो दैट इज व्हाई इन द आयुर्वेदा आल्सो दे जनरली यू नो टेल यू नॉट टू हैव कर्ड विद द मील्स. तो वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू में इसका एक्सप्लेनेशन है. When should we have it, like before the meal, or if we have it like after the meal, then after how many minutes should we So consume? generally your milk products and generally your fruits, they are suggested कि आप अपना let's say mid morning या evening time ले लो. This will help. बट मैम आयुर्वेदा में राइस और कर्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बताया गया है. फॉर द डाइजेशन पर्पस, क्योंकि वो डाइजेशन के लिए इट्स रियली गुड. तो वो देखो कहीं हर जगह हमारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट वाला पार्ट छोड़ के भी हम लोग जब उस पार्ट पे आएंगे फॉर द डाइजेशन एंड एवरीथिंग, तो यस कर्ड एंड राइस टुगेदर दे एक्चुअली आर गुड फॉर योर डाइजेशन. तो जहाँ पर भी आपको इनडाइजेशन है, स्टमक एक है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो हम आपको बोलते हैं टू हैव द कर्ड एंड द राइस टुगेदर. Okay, so today we'll be starting with the fibers, but before that, let's have a discussion on the sources of the, you know, the food sources of the carbohydrates. We need to take care that we need to control the serving size of the simple carbohydrates. तो जो simple carbohydrates होते हैं, हमें उसका सर्विंग साइज को कंट्रोल करना है. सो लेट्स से द शुगर्स, लेट्स से द जैगरी, हनी, राइट? वी ऑफन हियर पीपल सेइंग जैगरी बेटर है, हनी बेटर है, व्हाइट शुगर से ऑब्वियसली बेटर है, राइट? रीजन बीइंग जैगरी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो आपका डाइजेशन इंप्रूव करते हैं. शुगर एम्प्टी कैलोरीज होते हैं जो सिर्फ यू नो आपको कैलोरीज देते हैं बट नॉट एनी अदर न्यूट्रिएंट. सो आपका जो जैगरी होता है इट विल गिव यू एडिशनली आयरन एंड अदर मिनरल्स एज वेल. सो दैट्स व्हाई फॉर श्योर वी हैव बेटर ऑल्टरनेटिव देन द शुगर्स व्हिच इज वेरी प्रोसेस्ड and which are like empty calories, कि वो सिर्फ आपको calories देंगे, not any other nutrient. But we have, you know, but they are not the other alternatives. Let's say the jaggery or honey, they are not the best alternative. Reason for that is they are also the simple sugars, right? So that's why we need to make sure कि jaggery और honey जो लोगों को generally लगता है कि हम कितना भी खा सकते हैं या sugar नहीं खानी diabetes में, we can have the jaggery, वो सब चीजें are like you know myths. तो हमें make sure करना है कि we are having one thing which is जितने भी simple sugars हैं including all your honey, jaggery, white sugars, anything, they are simple sugars somehow. They will give you a spike in the blood glucose level. उनके additional benefits रहेंगे. Again, we need to control the quantities and everything. And for the human body, so you know we cannot digest the fiber, but still you know we have the other benefits of the fiber that we will be discussing today, and they are beneficial for us. So one thing we need to make sure is अगर हम complex carbohydrates consume कर भी रहे हैं, even if we are consuming the complex carbohydrates, we need to make sure they are also having the fibers. अगर आप देखोगे 1960s, 70s में nobody was talking about the fibers. When you know we started with all these diseases, specifically you know diabetes and related to other you know cardiovascular diseases such as high blood pressure and all those things, then we discovered that you know there is one other thing in the plant foods which is really good, and that is fiber. Again, when we did researches, so when you know people were consuming fruits, vegetables, cereals, whole cereals, and when we started researching, we found out that we are unable to digest the fibers. Fibers तो हमें digest ही नहीं होते हैं, and when we are not able to digest them, which means we are not absorbing them, right? क्योंकि digestion ही नहीं हो रहा है, तो one thing is कि nutrient का absorption भी नहीं होगा. So which means हमारा nutrient absorb नहीं हो रहा है. When the thing that is happening, which means that nutrient is not going in our body, and that nutrient is not providing us energy. So which means it stays in your digestive system. तो होता क्या है? Let me just explain you the digestive system with a good you know picture. So let's say we are chewing the food. हमने food खाना शुरू किया. So this is मतलब मैं mouth नहीं बना रही हूँ. Somehow this is the food pipe. So it's like a pipe जिससे food travel करता है. So you know the food travels through this pipe. Then we have the stomach.
So this is how, the stomach is there. Then we have the small intestine. This is the small intestine. And around it we have, the large intestine. So this is our large intestine. तो अगर आप structure कुछ देखोगे, so it will be like this only, right? तो होता क्या है ultimately small intestine के बाद food जो है वो large intestine में जाता है. Okay. So what happens is when your food digestion starts from your stomach में we have few things. One is your hydrochloric acid, one major thing. ठीक है, तो यहाँ पे होता है hydrochloric acid, which is also known as HCl, right? So hydrochloric acid is there in the stomach. This is the only part जहाँ पे human body में acid होता है. Else आपने देखा होगा कि acid वगैरह अगर skin पे आ जाएगा तो it burns your skin. But it is there in the stomach क्योंकि stomach में एक layer होती है which ultimately protects your stomach lining from the damage from this hydrochloric acid, and this is very important for the digestion of the food. तो आपके stomach में we have hydrochloric acid which is there. Then we have various enzymes. So यहाँ पे आपका कुछ enzymes होते हैं which are there. So we will be having the various enzymes which are there in your stomach. तो ये आपका food का again digestion करते हैं. Right, then ultimately from the stomach food moves to the small intestine. So when the food moves to the small intestine, यहाँ पे small intestine के starting part तक तो digestion ही majorly होता रहता है. So digestion is also happening in the small intestine. Then in the lower part of the stomach intestine we have the process which is known as the absorption. So आपका जो small intestine है, if I make it like this, like a clear picture, तो इसके यहाँ पर आपका जो है basically यहाँ पर कुछ ऐसे विलाइज होते हैं जिनको हम विलाइज बोलते हैं. सो इट इज लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस. ये क्या करते हैं, ये ब्लड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं और नीचे होते हैं आपके ब्लड वेसल्स और ये उन ब्लड वेसल्स में आपका न्यूट्रिएंट्स को सेंड करते हैं. सो नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स दे आर इन द ब्लड एंड नाउ दे आर इन द ब्लड सर्कुलेशन. तो वो आपका ब्लड सर्कुलेशन में जाके और आपका जो भी फंक्शन या जहाँ पे भी उनका यूटिलाइजेशन होता है वो करते हैं. सो विच मीन्स वी हैव बेसिकली आर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड, राइट? अब होगा क्या, नाउ इमेजिन अ सिचुएशन, आपका फूड जब डाइजेस्ट हो रहा था, सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ तो आपका वो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, च्यू करना, राइट? और वो प्यूरी बनना फूड का आपका स्टार्ट हो गया था. सो वो जो फूड है वो पूरा का पूरा आपका प्यूरी कन्वर्ट हो गया है, इवन आपके स्टमक में जाके और वो अच्छे से प्यूरी काइंड ऑफ बन गया है, राइट? और वो पूरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चला गया. Now when it is there in the small intestine, जो absorption होना था nutrients का वो हो गया. Now there will be wastage क्योंकि जो आपका absorption हो रहा है वो nutrients का हो रहा है. So now there will be wastage जो आपका small intestine से जाना है बाहर, right? So now this moves to, or the undigested food including the fibers. So all that in your is in your small intestine. Now it ultimately moves to the large intestine. तो अब वो क्या करेगा, आपका large intestine में जाएगा, राइट? तो वो जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, सो नाउ देयर विल बी वेरियस थिंग्स दैट विल हैपन विद द अनडाइजेस्टेड फूड. So one thing is, you all must be knowing about the gut microbiota. Everybody is talking about ki have curd, have yogurts, have Yakult. They are good for your gut microbiota, your bacteria in your gut and everything. So those bacteria, they are majorly, वैसे तो वो small intestine से start हो जाते हैं, but they are majorly are in your large intestine. तो वो जो आपके gut bacteria हैं, they are there in your large intestine. And they also need the food क्योंकि ultimately वो कर क्या रहे हैं, they are keeping your large intestine का environment healthy. Imagine there is the waste product which is going through the large intestine, and ultimately at the end of the large intestine we have rectum through which we excrete out the feces, right? So वो आपका fecal excretion होता है from the large intestine. So which means ultimately जो large intestine में जा रहा है वो wastage है. So imagine a pipeline जिसमें सिर्फ waste product जा रहा है, तो ultimately तो वो सड़ जाएगा. But we have the gut microbiotas which are trying to keep it healthy, which are trying to maintain the gut health or to keep it healthy, ताकि उसमें ऐसा ना लगे कि सिर्फ wastage जा रहा है. So here we have the gut microbiotas. अब उन गट माइक्रोबायोटास को भी फूड चाहिए, ठीक है? फाइबर के अभी मैं सबसे बड़े बेनिफिट पे आ गई हूँ, बाकी बेनिफिट सभी बचे हैं ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में. सो नाउ इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन वी हैव अनडाइजेस्टेड फूड इंक्लूडिंग द फाइबर. सो वन ऑफ द मेजर थिंग इज दोज गट माइक्रोबायोटास के लिए दैट फाइबर इज द फूड. सो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू ईट आउट द फूड, वन थिंग. और जब वो उसको खाते हैं देन दे आर कीपिंग देमसेल्फ हेल्दी. सो जो फाइबर चीजें होती हैं, दे आर द फूड फॉर द माइक्रोबायोटा. सो दैट इज व्हाई वन थिंग वी नीड टू टेक केयर इज कि हमारे डाइट में फाइबर होगा. सो माइक्रोबायोटास दे विल कीप ऑन रिसीविंग देयर फूड बिकॉज फाइबर इज द ओनली थिंग व्हिच गोज अनडाइजेस्टेड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन.
तो वो हमारा जो फाइबर है वो हमारे गट माइक्रोबायोटा के लिए फूड है. वन थिंग, गट माइक्रोबायोटा सर्वाइव ऑन दैट फूड. अनदर थिंग इज अल्टीमेटली जो फाइबर होता है वो एक बल्क ऐड करता है टू द फीसेस. सो इट बेसिकली इज एडिंग जो वेस्टेज जो थोड़ा कम होता. अब क्यों मना करते हैं कि यू शुड नॉट बी हैविंग रिफाइंड फ्लावर एंड ऑल, उसमें फाइबर नहीं होता, क्योंकि उसका वेस्टेज बहुत कम होता है. एंड दैट वेस्टेज इट एक्चुअली कॉजेज द कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो अपने साथ बाकी का वेस्टेज लेकर नहीं निकल पाते हैं. बट दीज फाइबर्स व्हाट दे डू इज दे आर पैक्ड इन देमसेल्फ. वो ऑलरेडी पैक्ड है, वेस्टेज है बहुत सारा, और बाकी वेस्टेज को भी क्लियर आउट करते हुए निकलेगा. सो दैट इज व्हाई फाइबर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग which should be there in your diet. To one thing, to give bulk to your feces, आपके feces को bulk देने के लिए, so that you do not have the constipation. One thing. Another thing is they are the food for the gut microbiotas. So वो जो gut microbiotas होते हैं वो उसका fermentation करते हैं. So you will see in the fibers that they are fermented in the large intestine. They are not digested by the human body. They are not digested by the small intestine, but they are fermented in the large intestine by gut microbiotas. क्योंकि वो जैसे आपका इडली एंड ऑल का फर्मेंटेशन होता है, सेम प्रोसेस happens in your large intestines every day. And imagine that bulk formation to your feces which is happening. So that's why being fibers, they are not digested, they are not supplying any energy, but still they are good because they are keeping your large intestine healthy by providing food to the gut microbiotas, right? So this is the major point which is very much there, right? So another thing is then we have the plant polysaccharides. So it ultimately one thing it is क्योंकि hard. So fiber आपने देखा होगा, you must have seen लोगों को constipation वगैरह होते हैं, they go for the isabgol. आपने देखा होगा xylem husk जिसको हम लोग बोलते हैं. So it basically absorbs water and it is very much there. तो आपने देखा होगा वो काफी. So just to let you know, all that stem, all that peel of the vegetables, all that the thing which is there, जो आपके apple के बीच में pulpy सा होता है, so that is basically your fiber only, and that gives structure to the plant. So वो आपके plant को one thing structure देता है. Another thing is basically आपके food को crunch देता है, crunch and the texture. So imagine eating something जिसमें fiber है ही नहीं. Let's say the refined flour. You will feel कि वो बहुत soft हो जाते हैं. But imagine having, the apple or some fruit or some vegetable, you will find them very hard. Or imagine yourself giving the wheat brands. वो बोलते हैं ना आटा छान के नहीं खाना चाहिए, wheat flour. You should be consuming the wheat flour without straining. So all that is basically your fiber only, and it gives crunch. One thing, a texture to the food, which is actually makes you work hard for chewing it. One thing, right? So ये आपका starting from your mouth ही आपका खुद को healthy रखना start कर देते हैं. So it gives structures to the plant. One thing, because it's a structural part और hard part जो होता है, that is fiber only, and it gives crunch and the texture to the plant. So if I talk about the kind of your fiber, let me just cover this table first. So we have two types of fiber. One is your soluble fibers and another one is your insoluble fibers. ठीक है. So one is basically आपका soluble fibers, another one is insoluble fibers. So as the name suggests, जैसे कि आपका name ही बताता है, because जब भी हम solubility की बात करते हैं, we talk about the water, कि water में वो कितना soluble है. ठीक है. So one thing is the soluble. So imagine mixing salt or sugar in water. तो आपने salt या sugar, insoluble fibers में क्या होगा? Insoluble fibers basically आपके जो हैं, they are the ones जो कि पानी में mix नहीं होंगे, but they will absorb the water. So they basically won't be kind of absorbed. They are not mixable. वो sugar की तरह mix नहीं होंगे, but they will absorb the water. तो basically आपका वो जो है आपका जो जैसे कि for example आपका let's say the brands. So brand कभी भी आपका पानी में मिक्स नहीं होगा. सो दैट इज समथिंग कि आपका वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा, बट वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा. सो इमेजिन ऑल द पील्स ऑफ द वेजिटेबल. तो आपके जो पील्स होते हैं सब्जियों के, सो वो सब चीजें जो है आपकी दे मेंटेन देयर स्ट्रक्चर. वो कभी भी आपका एब्जॉर्ब नहीं, कभी भी सॉल्यूबल नहीं होंगे पानी में. बट आपकी जो बाकी चीजें हैं, लेट्स से योर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द वेजिटेबल्स, दे विल बी सॉल्यूबल इन द वाटर. तो ये दो अलग अलग चीजें होती हैं. सो इफ यू सी द एग्जांपल्स, तो इसमें कुछ पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स दिए हुए हैं, सच एज योर गम्स, म्यूसिलेजेस और द पैक्टिन. सो पैक्टिन कौन सा पार्ट होता है, यहाँ पे काफी साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इजी एक्सप्लेनेशन होता है. इमेजिन द एप्पल, और जो एप्पल का व्हाइट वाला पार्ट होता है ना,
जो सॉफ्ट पार्ट होता है अंदर का, दैट इज योर पैक्टिन. सो उसमें आपका पैक्टिन प्रेजेंट होता है, जिसका साइंटिफिक जो नेम होता है दैट इज योर गैलेक्टोरियोनिक एसिड और अदर अराबिनोज और ये सब चीजें. सो वो जो आपका सॉफ्ट एप्पल का पार्ट होता है दैट इज बेसिकली योर पैक्टिन. सो वो इन द वाटर, राइट. देन इज द गम्स. सो गम्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, इफ यू विल सी द बीन्स, द फ्रेश बीन्स, तो उनमें जेल जैसा कुछ सब्सटेंस होता है. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स जिनमें ऐसे गम्स होते हैं. सो दो दैट स्टिकी सब्सटेंस, एज द नेम सेज, दैट इज बेसिकली अ गम. सो वो आपका जो है बेसिकली योर जैसे ओट मील्स को पानी में मिक्स करोगे, देन ऑल्सो इट फॉर्म्स अ स्टिकी सब्सटेंस काइंड ऑफ थिंग. सो दैट इज बेसिकली अ गम्स. सो जो आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एंड इट इज अगेन इजिली मिक्स्ड इन द वाटर. तो इफ यू विल सी जितने भी आपके ये एमवे वगैरह के फाइबर्स आते हैं, यू विल सी उसमें आपका बीन्स से ग्वार गम वगैरह एक्सट्रैक्टेड होता है. सो दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ योर सॉल्यूबल फाइबर्स विच आर देयर, और वो पानी में मिक्स करके पीने होते हैं. सो दैट मेंबर्स फॉर एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, दैट यू कैन रिलेट. Then we have basically, the mucilages. So it is basically again the harder, not the harder, but the softer part of the leaves and everything, which is there. So that is the mucilages. So pectin, gums, and mucilages, these are the parts of the plants and the, vegetables and the fruits, which actually are the fibers, types of fibers, and they are soluble, which means they are water soluble. How they function is, what they do is, now they are making a gel-like substance. They will make a thick जेल लाइक सब्सटेंस. इमेजिन आपने कुछ उसमें जेल लाइक सब्सटेंस बनाया. नाउ ट्राई टू स्पेल इट. आप उसको आप गिरा के देखो. It will take time. Movement will be slow, right? Because it's a gel-like substance. So same thing happens with the soluble fibers. होता क्या है soluble fibers में आपका? They actually basically kind of what they do is they get mixed in the water. They make a gel-like substance which makes the movement of the food slow. One thing. ठीक है? मूवमेंट स्लो हो गया फूड का, राइट. उसको अलग करना फिर काफी डिफिकल्ट होता है, राइट. सो सेम थिंग हैपेंस विद द सॉल्यूबल फाइबर्स. व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू बेसिकली काइंड ऑफ मिक्स देम. तो आपने क्या किया, आपने बेसिकली एक सॉल्यूबल फाइबर कंज्यूम किया जो कि एक जेल लाइक सब्सटेंस जा रहा है, स्लो मूवमेंट हो रही है. सो नाउ गो बैक टू द डाइजेशन प्रोसेस. अब मूवमेंट स्लो हो रहा है, राइट. और हम लोग क्या नहीं चाहते हैं, हम लोग एब्जॉर्प्शन में स्पाइक नहीं चाहते हैं कि ग्लूकोज एकदम से एब्जॉर्ब ना हो. सो व्हाट इट डज इज, क्योंकि जेल लाइक सब्सटेंस बना दिया है, सब चीजें आपस में फंस गई हैं, स्टिकी हो गई हैं. सो व्हाट इट विल डू इज कि ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा. सो इमेजिन, लेट्स से आप एक रूम में एंटर करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू एंटर अ रूम जिसमें बहुत सारी अगर वो रूम एम्प्टी है, अगर वो रूम खाली है, तो आप बहुत जल्दी घुस जाओगे उस रूम के अंदर, राइट. यू विल एंटर द रूम वेरी इजिली. बट काइंड ऑफ प्यूरी विच इज वेरी स्टिक्ड टू इटसेल्फ, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है इन योर ब्लड, दैट विल बी वेरी स्लो एंड इट विल रेज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल very slowly. So that's why for control of the diabetes, आपका जो glucose है that will आपका जो soluble fibers है that will really help, right. Then the next part we have is basically your cholesterol levels, right. So same way जैसे कि आपका glucose का absorption slow हो रहा है, same way there will be एकदम से blood में level नहीं increase करेगा. So this again helps you with the cholesterol, right. So आपके जो soluble fibers हैं, they are helping you with the regulation of your blood glucose level and the cholesterol level. Again, the third health benefit it's not mentioned here. The third health benefit which will be there, as the movement of the food is slow, food की movement slow हो गई है. So imagine food is staying in your stomach for the longer duration of time. तो वो खाना जो है आपके stomach में ज्यादा देर के लिए रुक रहे हैं, right. So it's just like कि आप ज्यादा देर के लिए जब when food will be there, so imagine it is delaying your hunger. आपको भूख जो है देर से लगेगी. So as I mention, I always mention कि आप जो है let's say you're having some fruit or something, तो आप देखना आपको भूख लगेगी because the movement of the food is slow and it is making you feel fuller for the longer duration of time. तो ओट्स तभी बोला जाता है कि ब्रेकफास्ट में ओट्स खाओ, आपको आपको भूख नहीं लगेगी बहुत ज्यादा देर तक. तो all these things are actually helping you to maintain your weight. So this was about the soluble fibers. Now coming to the insoluble fibers. So insoluble fibers में क्या होता है? They are generally hard. So right? So they will absorb some water, but they will not be completely soluble. वो soluble नहीं होंगे, right? So that's why what happens is वो आपका क्या करते हैं?
वो आपका वाटर जब एब्सॉर्ब करते लगते हैं तो वो भी आपको एक फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं. सो वन थिंग, वो कैसे कैसे हेल्प करते हैं. वन थिंग, इनसॉल्युबल फाइबर्स, क्योंकि वो शेप मेंटेन करते हैं और वो हैवी होते हैं और वो हार्ड होते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग यू फील फुल. आप इनसॉल्युबल फाइबर खाओगे वो भी आपको पेट भरा हुआ सा रखेंगे. रीजन मीन वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं और वाटर थोड़ा सा तो वो एब्जॉर्ब करेंगे ही करेंगे. वन थिंग. अनदर थिंग विल बी आपका दे विल मूव फ्रॉम योर फूड पाइप. जो मेजरली बल्क प्रोवाइड करने वाला काम है दैट इज डन बाय द इनसॉल्युबल फाइबर्स, विच इज जनरली द पील ऑफ द वेजिटेबल्स, द ब्रान, होल व्हीट के जो ब्रान होते हैं या पील्स ऑफ योर वेजिटेबल्स होते हैं, जो हार्ड वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब चीजें. सो वो आपका इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं. दे विल एब्सॉर्ब द वाटर, becomes heavy, maintains their shape, hard for the digestion for the human body, digest तो होते ही नहीं है, and ultimately they will move the food and they will clear, वो पूरा clean करते हुए जाते हैं आपके digestive system को. That's why they are helping you with the constipation. So insoluble fibers, they are really good for the constipation. So that's how that because that layer and that fiber, that is insoluble fiber. Your bran को आप जितना मर्जी अच्छे से कुक करो, जितना मर्जी जो मर्जी करो, it will not be mixed, तो वो soluble होगा ही नहीं. Peels of the apples, they will maintain the thing, वो squeeze हो जाएंगे but they will maintain their structure, right? So that is basically your insoluble fibers, जो जितने भी आपके hard peels, stems, जितनी भी चीजें होती हैं, right? So that is basically, और ये अगर मैं इनकी बात करूँ, so they are generally the part of the stem, जैसे कि आपका cell membranes which are there. Again, the kind of your fiber, benefits of the fiber. So insoluble fiber, majorly it helps you with the constipation, one thing. Soluble fiber, it actually helps your foods to digest slowly, slow movement करता है foods का, which helps you with the with the making you feel fuller for the longer time. Another thing is it actually helps, जो fibers होते हैं, they help you with the weight control, because ये आपका portion size control करने में help करते हैं. Try having something which is made out of refined flour. तो आप मैदे का बना हुआ कुछ खाओगे, you will see कि आप बहुत ज्यादा खा लोगे. Try having momos, right? मतलब just a basic example. You will overeat. You will end up overeating not because of the taste, because you will not feel fuller. आपको वो पेट भरने वाली feeling ही नहीं आएंगी. But have some fruits, oats, wheat bran की चपाती या whole wheat flour. You will feel fuller बहुत जल्दी से. So it basically again fiber आपका it's you with the weight management as well. So how much fiber is required? So for a male or a female, adult male or the female, the requirement of the fiber is somewhere around 30 to 35 grams per day. So इतना fiber जो है आप अपनी balanced diet से बहुत easily ले सकते हो. You do not require all those supplementations which are there in the market. You just need to have the whole pulses, whole grains. So whole pulses as in the dal, kala chana and all that. Whole cereals such as your wheat flour, whole wheat flour, or maybe rice भी है तो not the white rice but the brown rice or something, or the millets you can have. Again, some fruits and vegetables in the salad form, in the fruits form, whole fruit. So that is how this thing is working. One thing I would like to add here is talking about the fruits. मैं जैसे कि मैंने बताया भी था कि कुछ लोगों को क्या होता है, काफी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि फ्रूट्स में तो फ्रक्टोज होता है तो फ्रूट्स तो कम खाने चाहिए क्योंकि सिंपल शुगर है उसके अंदर. So there are two benefits which are there of the fruits. One thing is fructose is in very less quantities, and fructose being the sweetest sugar, तो वो कम quantities में भी आपको अच्छा खासा sweetness देता है. One thing. Another thing is the fiber content of the fruits and the vegetables. So उसमें जितना fructose होता है उससे कहीं ज्यादा उसमें fiber भी होता है. Gut microbiota. It's generally said that banana is really good for your gut microbiota. So always make sure what you choose should ultimately give you the benefits. So that's how the fibers are benefiting you with your gut health, with your digestive system, with weight management, with blood glucose level, with cholesterol levels, and finally the obesity. So that's how the fibers helps you, right? Yes, Elvi? Two is beneficial in both constipation as well as in diarrhea. Like, is it? No. अगर आप क्योंकि constipation में बहुत ज़्यादा fiber दोगे, क्योंकि it's not the problem with the water. अगर diarrhea की हम बात करें, it's something that your intestine is unable to hold your stool, right? So this is something like either your food is moving very fast, तो वो case होता है. थोड़ा सा soluble fiber is good in case of diarrhea, but again we do not give that क्योंकि ultimately आपका digestive system बहुत ज़्यादा disturbed होता है. तो insoluble fiber तो बहुत ही बुरा होता है क्योंकि उस टाइम पे आपका digestive system weak होता है. One thing, fibers are really good increasing the bulk of the feces. वो और ज़्यादा diarrhea करेगा. That is why if you will see the people around you when you have diarrhea, so people generally recommend कि आप bread खा लो, दूध के साथ bread खा लो या bread खा लो in general, क्योंकि वो refined flour होता है, does not have fiber and it will cause constipation. So that's the reason behind that. So we do not give fibers in case of diarrhea.
But ma'am, we take that asylum husk, right? with the curd, right? हाँ. देगा कंडीशन को अगेन सीइंग द सिचुएशन, क्योंकि होता क्या है, लोगों ने एक बात सुन ली है, बिकॉज डायरिया में भी बहुत सारे टाइप्स के डायरिया होते हैं, टॉनिक डायरिया, एटॉनिक डायरिया. सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल बी कवरिंग ऑल द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल्स. सो डिपेंडिंग ऑन दैट टाइप ऑफ डायरिया देन इट डिपेंड्स, क्योंकि विद द एज योर मसल टोन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट लूजेस, एंड इन दैट केस योर soluble fiber somehow helps, but not with the diarrhea that children are having, because generally वो food poisoning या कुछ ऐसा होता है. So that also we need to. And second question I have, you mentioned like products like Amway, or let's say the product like Herbalife, right? During the class only I was searching out their ingredients. So Herbalife, it was mentioned all the soluble fibers like guar, you mentioned, yeah. So why do people say कि Herbalife नहीं लेना चाहिए? Like I have heard lot of lectures. They say कि Herbalife लेने से after like once they left the product ना, तो उनका kidneys पे effect आया and they started gaining the weight and all. अच्छा, इमेजिन यू आर हैविंग एन एप्पल, ठीक है, सेटिस्फेक्शन भी देगा कि आपने एप्पल खाया है, और यू नो कंट्रोल्ड फाइबर देगा इन अ सिंगल डाइट. क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीजें करते हैं, लेट्स से द प्रोटीन, अब हो क्या रहा है नाउ, यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं है कि आपकी इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, बट जितना आप देखोगे इन सबके रिसर्चेस हैं जो ब्रांड्स करा रहे हैं कि इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो हमारा प्रोटीन पाउडर खा लो, राइट? इवन फॉर द जनरल पीपल कि आप प्लांट प्रोटीन खा लो, but it depends on how you are consuming your diet. So ultimately when you will start planning the diet for a sedentary lifestyle, Indian diet protein दे देगा, but the condition is you have to include milk and milk products, you have to include the pulses, right? So लोगों को क्या लगता है easy alternate as in your over consumption of your nutrients. So one thing that happens is आपके organs पे burden आते हैं. Imagine, अच्छा let's say आपको assignments मिलते हैं, ठीक है? Imagine I give you assignment on Saturday कि आपको ये 4 assignments Sunday को ही करके देने हैं. सैटरडे को दे रही हूँ और आपको संडे को देने हैं. सो इमेजिन द बर्डन यू आर हैविंग. बट लेट्स से वो 4 असाइनमेंट मैं आपको संडे को दे रही हूँ एंड आई एम टेलिंग यू कि आपको नेक्स्ट सैटरडे को देने हैं. सो यू हैव सम डेज, you have the assignment, you will manage your work accordingly, right? So same way imagine your body getting the concentrated nutrients at a single time जब आप उनको शायद use भी नहीं कर रहे हो, so आपके organs burden हो जाते हैं. So once you know leave all those products, so आपके उस time तक आपके जो organs होते हैं they are overburdened, they actually stop functioning, या उनका functioning बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ultimately problem start होती है. सिर्फ one thing, human को psychological satisfaction चाहिए यार, नहीं तो else we have lots and lots of supplements which are there in the market. हमें क्यों खाना खाना है? हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, विटामिन ए का भी सप्लीमेंट, बी का सप्लीमेंट, टैबलेट्स खाते रहेंगे और जिंदा रहते रहेंगे, बट वी डू नॉट वांट दैट. वी वांट अ डाइट, हमें टेस्ट भी चाहिए, राइट? तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिल रही है फूड से, जो हमें हर्बल लाइफ या किसी भी ऐसी चीजों से नहीं मिल रही है. बट हाँ, आई वोंट से ऑल द सप्लीमेंट्स आर बैड, क्योंकि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत भी पड़ सकती है. लेट्स से अ प्रेग्नेंट वुमन, दे नीड एक्स्ट्रा कैल्शियम, दे नीड एक्स्ट्रा आयरन, या लेट्स से अ पर्सन वर्किंग आउट अ लॉट. अब उसको हम हर्बल लाइफ छोड़ने के बाद जो लोग खाना खाना शुरू करते हैं ना, फिर वो तो उसका तो कोई एंड ही नहीं है, बिकॉज दे अल्टीमेटली यू वर यू नो, वो आपको ब्रेकफास्ट स्किप करने के लिए बोलेंगे, वो डिनर स्किप करने के लिए बोलेंगे, और अल्टीमेटली यू आर यू नो अवे फ्रॉम द फूड. और जब आपको फिर वो टेस्टी खाना आपके सामने आएगा तो आप ओवर ईटिंग करोगे ही करोगे. सो दिस इज व्हाट हैपन विद मोस्ट ऑफ द हर्बल लाइफ क्लाइंट्स, और वो उनका वेट दोबारा पुट ऑन हो जाता है. सो इट्स बेटर यू आर हैविंग अ नॉर्मल डाइट. जब आप नॉर्मल डाइट से वेट लॉस करोगे तो आपको पता है कि यही खाना खाना है आपको. सो यू आर ईटिंग ऑल दैट टेस्टी फूड एज वेल विद द वेट लॉस प्रोसेस. सो दैट्स ऑल्सो अ नो. Then we have how the significance, which means the importance or the functions of the the fiber. So they can actually absorb and hold the water, which can actually increases the fecal bulk. तो वो water का आपका hold कर रहे हैं, जो आपका fecal के bulk को increase कर रहा है. They act as laxatives. So आपका fecal excretion, laxatives क्या होते हैं? They are something that increases your fecal excretion. So they functions as an laxative. So आपने देखा होगा तभी वो xylem husk और ये सब चीजें दी जाती हैं. So basically to increase the fecal bulk. Then it prevents the constipation in your stomach, and ultimately it prevents the constipation. So since the fiber is absorbing the water, so it the fecal formation will be, the fecal which are formed will be softer. So that is why this is there. Again, the soluble fiber. So there is one thing which is bile juice. ये भी आपका digestion में help करता है. So how it helps is, आपका जो liver होता है, liver एक juice produce करता है which is your bile juice. ठीक है? सो बाइल जूस कहाँ से आता है, क्यों आता है? लेट मी जस्ट टेल यू. अब लिवर को भी आपने सुना होगा कि लिवर भी आपका जो है टॉक्सिन्स रिमूव करता है बॉडी से. सो लिवर कैसे टॉक्सिन्स रिमूव करेगा? लिवर से तो कोई एक्सक्रीशन होने का पार्ट ही नहीं है. किडनी अगर टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा है तो वो यूरिनेशन के थ्रू कर रहा है, क्योंकि किडनीज क्या करते हैं? ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का जूस. ठीक है? सो ये बाइल जूस आपका जाता है टू द गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर आप लोगों ने काफी सुना होगा, क्योंकि इसमें तो स्टोन्स होके और ये तो निकल ही जा रहे हैं. तो इट्स नथिंग, इसका फंक्शन कुछ नहीं होता, डॉक्टर्स आर राइट. बट इट इज अ स्मॉल पाउच लाइक थिंग जिसमें आपका जो है बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, क्योंकि बाइल जूस जो है लिवर बनाता रहेगा, गॉल ब्लैडर उसका स्टोरेज करता रहता है टिल द टाइम इट्स बीइंग यूज्ड.
अब वो यूज कब होता है, वो यूज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फॉर द डाइजेशन, वो भी आपका मेजरली फैट्स का, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप पढ़ोगे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम काफी क्लियरली करोगे। सो व्हाट हैपेंस इज आपके जो फैट्स होते हैं, जब भी whenever you are consuming fats in your diet, again it goes to the small intestine, that's the part of the होते हैं ऑयल्स या फैट्स। तो सेम वे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, लिक्विड होंगे, फूड का प्यूरी बनेगा, उसमें भी वाटर होगा ही, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर, क्योंकि वाटरी एक काइंड ऑफ वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे, राइट। अब उसमें फैट्स तो सॉल्यूबल होंगे नहीं, बट देयर इज समथिंग in the bile which helps the fats so that they can easily be digested, क्योंकि अब वो फैट्स छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन होने के लिए फैट्स को एंजाइम्स तो चाहिए डाइजेशन के लिए, साथ में एक और चीज चाहिए होती है जो बाइल जूस वाले थे। सो वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है जब तक फैट नहीं आता डाइट में, मील में फैट आएगा, देन द गॉल ब्लैडर विल रिलीज द बाइल जूस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा तो वो आपका क्या करेगा, वो बेसिकली आपका फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसका वो फंक्शन भी हो गया वहाँ पे, एंड अल्टीमेटली इट गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वो लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाके आपके फीसस के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो आपके जो फीकल एक्सक्रीशन होता है उसके साथ में ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो आपके इवन जो सॉल्यूबल फाइबर वगैरह भी होते हैं तो वो आपका बाइल जूस को एब्जॉर्ब करके और फिर उसको बाहर निकाल देते हैं विद द फीसस। बाइल जूस में आपका जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल भी होता है बाई चांस जो लिवर को बाहर निकालना है, टिल द टाइम योर बॉडी इज वर्किंग वेल में, तो वो उसको बाहर निकाल देती है थ्रू द बाइल जूस। सो द एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल that is also excreted through the bile juice, और वो आपके feces के साथ में excrete out हो जाता है। So imagine like how smartly your body is working till the time you are not abusing it, but वो अगर part आ जाता है तो आपका liver function ही करना बंद कर देगा, मतलब with alcohol and everything, right? Again, okay, so basically fiber is also helping reducing the cholesterol absorption. The intake of fiber is also there, then it prevents the cancer of the colon. Colon is the large intestine. So ये आपका large intestine के cancer को भी prevent करता है. So which means this is really going to help you with the health of your large intestine. So again, the intake should be somewhere around 30 to 40 grams per day, depending on the calories which are coming from your diet. And so in future, we will be having the various. So one thing is basically आपका energy production, energy storage, बताती हूँ मैं, building macronutrients. So what happens is if you will see, so basically if you will see energy production, so आपको बताइए glucose is coming from the carbohydrates you are consuming, and that glucose is going into the cells, और वो सेल के अंदर जाता है ग्लूकोज, और फर्दर वो आपका ATP बना, राइट। सो आपका जो ग्लूकोज होता है वो सबसे मेजर, जैसे लेट्स से देयर इज अ कार, अब कार के लिए पेट्रोल कितना जरूरी होता है, राइट। एंड अगर वो सीएनजी वाली कार है तो उसके लिए सीएनजी जरूरी है, और वो अगर डीजल वाली कार है तो डीजल जरूरी है। हम पेट्रोल वाली कार में डीजल डाल के नहीं बोल सकते कि हाँ कार हमारी बहुत स्मूथली और बहुत एफिशिएंटली चलेगी या माइलेज ज्यादा देगी, राइट। सो सेम वे योर बॉडी नीड्स ग्लूकोज and your brain, it's like a machine, your brain one thing, your heart, so when your heart is beating ना तो वो contract और relax हो रहे हैं, so that contractile energy उसको हम बोलते हैं, that is given by the glucose, so आपके cells को body के लिए, so इसीलिए आपका जो सबसे major part है that is basically आपका the glucose, जो कि आपका इससे होना ही होना चाहिए, right. Then we have the carbon atoms which are there, the carbons which are there, तो वो carbon atoms आपका ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और ग्लूकोज ATP बना देगा। तो आपका ब्रेन सेल्स भी काफी ज्यादा सेंसिटिव है टू द लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। आप लोगों ने देखा होगा somehow generally जब बहुत ज्यादा सनलाइट होती है या कुछ ऐसा, आपको बहुत डिहाइड्रेटेड और बहुत, the next part is the energy storage, so आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी स्टोर करती है in the form of the glycogen, right? So again the carbohydrates, they help in the storage of the energy. So इसमें ये लिखा हुआ है, a molecule of glycogen may contain excess of 50,000 single glucose units. So imagine 50,000 highly branched, और जैसे ही ग्लूकोज कम होगा, जैसे ही ग्लूकोज लेवल कम होंगे या बहुत एनर्जी की जरूरत होगी, और ग्लाइकोजन विल बेसिकली ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन भी लॉन्ग चेन ऑयल जो बस ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड है ग्लूकोज की, सो ग्लाइकोजन विल ब्रेक डाउन और वो आपको ग्लूकोज दे देगा सो दैट यू कैन यूज द एनर्जी इन द इमरजेंसी पर्पज। सो वो आपका एनर्जी स्टोरेज का काम भी करता है योर ग्लूकोज। तो somehow this is again one of the major cause है, that is again helping in the formation of the NADPH, that is basically आपका nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, right? So वो आपका kind of basically इसको क्या बोलेंगे, इसको kind of
नॉट एंजाइम्स एक्चुअली, इट इज बेसिकली हेल्प करता है अगेन आपके रिएक्शन में ही. सो दिस इज अ काइंड ऑफ केमिकल आप इसको बोल सकते हो जो आपका फर्दर आपके रिएक्शंस में हेल्प करता है बॉडी में. देन अगेन इट इज हेल्पिंग यू टू अगेन जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो आपका फैट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. और फैट्स भी एसेंशियल है ह्यूमन बॉडी के लिए, क्योंकि आपके फैट, NADPH, RNA, DNA, ATP, since the human body is made up of carbon only, so that's why. Then the major part, which is you're sparing the proteins. So let's say imagine okay, so imagine कि आपका प्रोटीन जो है वो यूज हो गया एनर्जी के लिए. इमेजिन, राइट? तो आप प्रोटीन का जो फंक्शन है विच इज जस्ट अ सेकेंड, सो बेसिकली आपका जो प्रोटीन का जो फंक्शन है दैट इज बिल्डिंग मसल्स. एज अ ह्यूमन आप तो हमेशा मतलब चीजें करते रहते हो, ऐसा तो है नहीं. टीयर जो है आपका होता है मसल्स पे. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन दैट वियर एंड टीयर इज हैपनिंग, इट नीड्स रिपेयर एज वेल. सो एवरी डे बेसिस पे हमारे मसल्स को रिपेयर की भी जरूरत होती है, राइट? एंड दैट रिपेयर इज डन बाय द प्रोटीन्स इटसेल्फ. तो आपका जो पूरा रिपेयर होता है वो आपका प्रोटीन्स करते हैं. सो समहाउ इफ इमेजिन आपका ये मसल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है और आपका प्रोटीन तो एनर्जी दिए जा रहा है क्योंकि कार्ब्स हमने खाए नहीं है. तो हमारी बॉडी क्या करेगी? हमारी बॉडी वीक हो जाएगी. मसल्स मतलब मसल टोन लूज हो जाएगा, मसल्स रिपेयर नहीं होंगे, बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, मूवमेंट्स बहुत अच्छे से नहीं हो पाएंगी. सो अल्टीमेटली आप टायर्ड रहोगे. आपको स्पेयर द प्रोटीन्स, which means it should be sparing the proteins, मतलब वो प्रोटीन्स को बचा के रखना, स्पेयर करके रखना. It should spare the proteins for their function. So प्रोटीन का मेजर फंक्शन होता है आपका मसल रिपेयर करना, मसल फॉर्म करना, ग्रोथ कराना इन चिल्ड्रन, इन एडल्ट्स मसल रिपेयर करना. बहुत सारे और भी फंक्शंस होते हैं. बट अगेन अगर प्रोटीन एनर्जी देने लगेगा तो वो फंक्शन नहीं करेगा. सो दैट्स व्हाई वी वांट कार्बोहाइड्रेट्स टू फंक्शन एज स्पेयरिंग द प्रोटीन्स. बीट कर रहे हैं. बेसिक फंक्शनिंग के लिए सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए. मसल्स नहीं भी रिपेयर होगा ना, आप जिंदा रह लोगे. बट अगर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सो दैट्स व्हाई द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज टू गेट द एनर्जी सबसे पहले जिंदा रखने के लिए, राइट? उसके बाद मसल प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स को स्पेयर करके चल रहे हैं. दे आर फंक्शनिंग टू गिव यू एनर्जी. सो एज रिटन इन दिस PPT दैट इन द सिचुएशन वेयर कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट एबल टू मीट द ग्लूकोज बॉडीज एनर्जी, and the glucose is made out of them, क्योंकि ग्लूकोज फूड से नहीं आ रहा है. अगेन प्रैक्टिकली इफ वी टॉक अबाउट ग्लूकोज, तो फिर एज ग्लाइकोजन स्टोर हो जा रहा है. पेट में भी हम बोलते हैं कि आप खाना तो खाओगे बट पोर्शन कंट्रोल करके, राइट? सो अगेन द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स हैपेंस फ्रॉम योर बॉडी एंड आपका मसल टिश्यू टूट के और आपको एनर्जी देगा, राइट? बट अगेन इफ द एडिक्वेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट, सो व्हिच मींस इफ द ग्लूकोज लेवल्स सो ग्लूकोज का जो एक्शन होता है वो फैट स्पेयरिंग के लिए भी होता है. सो इमेजिन कि आपका अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छे से होगा तो आपका फैट एनर्जी के लिए नहीं यूज होगा और लिपिड्स के फंक्शन होते हैं. सो वी नीड गुड टाइप्स right? Again, there is one hormone which is known as the insulin. इंसुलिन क्या करता है मैं बताती हूँ. लेट्स से दिस इज द सेल. ये सेल है हमारा. एनर्जी देने के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को ATP बनाना है, तो सेल क्या करते हैं? सेल ग्लूकोज को अंदर एंटर करवाते हैं, ठीक है? जिसके लिए एक की जरूरत है. सो सेल का दरवाजा बंद
का नाम है इंसुलिन, विच इज अ हार्मोन. आप लोगों ने काफी सुना भी होगा. सो दिस इज अ हार्मोन इंसुलिन, जो कि आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर एंटर करा. क्या होता है, तो आपका ग्लूकोज यूज करता है एक और चीज. सेल को एक और चीज की जरूरत होती है, विच इज योर ऑक्सीजन, जो आप ब्रीद इन कर रहे हो, राइट. तो आप दोनों चीजें देखो कितनी जरूरी है, तभी तो थोड़ा सा वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, विच मीन्स एन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट. एंड थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली अ गुड क्वांटिटी, जितना ऑक्सीजन था उतना आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप ब्रीद आउट कर देते हो, जो आप प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे सेल डाइज. तो सेल को एटीपी नहीं मिलेगा, तो सेल कैन डाई, एंड अल्टीमेटली व्हेन सेल्स स्टार्ट टू डाई, व्हिच मींस ह्यूमन बॉडी इज डाइंग. सो दैट इज व्हाई दीस बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब जब भी जहाँ पे ग्लूकोज नहीं है, प्रोटीन्स तो बहुत थर्ड मतलब बेसिकली थिंग है, क्योंकि अगर कभी एनर्जी की हमें सबसे पहले जरूरत भी होती है, तो ग्लूकोज के बाद फैट्स आपके यूज होते हैं. करना है इनटू द ग्लूकोज, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली सेल तो ग्लूकोज ही यूज करेंगे, राइट. सो आपका फैट्स जो है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होंगे, एंड व्हेन दीज फैट्स आर ब्रेकिंग में कन्वर्ट करता है. अब लिवर कितना काम करेगा बेचारा, राइट. ओवरबर्डन हो जाएगा. सेम वे जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको तो बस कल तक मुझे 4 असाइनमेंट्स देने देने हैं, या आज रात with your liver. आपका लिवर क्या कर रहा है, लिवर इज बेसिकली ओवरबर्डन. इंटरमीडिएटरी ब्रेकडाउन. इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है कि वो आपका बीच में इंटरमीडिएटरी ब्रेकडाउन, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें आपकी एक ऐसी बॉडीज बनती हैं विच आर नॉट गुड, जिसको हम बोलते हैं कीटोन बॉडी.
ये आपकी एसिडिक है नेचर में। अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है, ह्यूमन बॉडी का पीएच होता है अल्कलीन साइड। आपकी बॉडी में कीटोन्स लेवल बहुत ज्यादा है, विच इज मेकिंग योर बॉडी एसिडिक एंड विच इज अल्टीमेटली हार्मिंग योर बॉडी। और वो कीटोन बॉडीज आपकी जो होती हैं वो फिर अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज टेलिंग यू। सो नहीं नीता, दिस इज नॉट आपको एग्जाम का फॉर्मेशन होता है विच इज वेरी नॉर्मल। नॉर्मल रेंजेस में अगर थोड़ा बहुत कीटोन फॉर्मेशन भी है तो विच इज वेरी नॉर्मल, बट जब आपका स्टार्वेशन एक्सट्रीम होता है या कुछ टेस्टिंग की जाती है तो उससे आपको पता लग जाता है कि अगर यू नो जैसे आपने देखा होगा ट्रेसेस या कुछ ऐसे आता है तो विच मीन्स आपकी यूरिन रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। बट Okay. That's the question. Like, because there was a trend where people went on to intermittent fasting. तो उनको हेडेक होने लगता है, गैस फॉर्मेशन होने लगता है, एसिडिटी होने लगती है।
the market में there was one keto diet as well. जो keto diet weight loss, not for the people who are trying to weight loss. जो कीटोन टेस्टिंग किट होती है, that I was telling you, वो every day like बोला जाता है